leads are the leads which will actually get converted. Okay, which actually can be converted. Okay, anyone else? Yeah. Yes, anyone else? What is a good quality of lead? Why we are talking about, and in a performance marketing, why we are major focusing on, for the clicks, for the sales, for the leads, and for the conversion. Yes, anyone? So we are 43%, right? And Sir, yeah. sir, good quality leads, if we speak it simply in one sentence, it's potential customers that are likely to convert into paying customers. Okay. Okay, perfect, perfect. Like Okay. the ones that Hmm. show a genuine interest Hmm. for buying our products or services, Hmm. and also approach us in the most professional sense, and that is those we can say as good leads. Okay. ठीक है, ठीक है. Anyone else? बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन करा हुआ है. Please answer. Yes. So Please it's a go ahead. time-based lead also. We should know which are the demographics and locations that we are connected or try to target, because the timing is very important for Hmm. the good lead, quality lead. To Okay. target a certain people who are ready or urgent to buy. So Very these nice. are the things that is very important for the good quality of lead. Okay, perfect. Yeah, Nitin, Pinky, Preeti, Sagar, Saloni, Shruti. Yes, please answer. Okay. So yes, when we talk about, performance marketing, it is a digital marketing strategy, right? Don't be confused that, it is a tool, or it is again a certain branch of a digital marketing. No, these are the strategies which we try to implement in our campaign. It can be on any interface. It can be on Google, it can be on Meta, or it can be on any third party tool, right? We always focus on, how to deliver the good quality of clicks. Mark my word, we also in a performance marketing, we include the clicks as well, right? We include the sales as well. It is not about the leads, right? We also calculate the clicks, we also calculate the sales, right? What is the difference between a clicks? Anyone? Clicks and a sales? What is the difference between a clicks and sales? So click So is when clicks are somebody. those. Yeah. Okay, Monica, you continue. No, go ahead, Meenal. Finish your thought. Yes. What is the difference So between clicks and click yeah? Circuit are these कि जो हम ad runs कर रहे हैं, and then the people click on those ads are Hmm. called clicks, and the sales are when they convert into a customer or convert into a purchase is called sales. Okay. So there should be a purchase, right? There should be a certain action should be taken by the customer, Yes, right? yes, sir. It CPA is important. Yes. right. Cost per acquisition should be important, right? That is very clear. Okay. Yeah. Further else, anyone? And please, it is a humble request, try to try to get the more information from my side, because as you already view my profile, I'm already into industry. I can share the a good experience, what I am getting from the customer, and even I can share the good pressure which I am getting from the customer itself. So it should be very clear to all of you. Don't be make it as a theoretical session. Make it, try to get the heat, or try to get the pressure which we guys are facing, and you guys will facing in the future. Perfect. Please, yeah, answer. What is the difference between a clicks and sales, and why the companies are more focusing on sales? I'm not saying the company are not focusing on clicks as well, but yes, in terms of a in terms of a e-commerce industry, companies are looking forward for the sales. Any example? Yes. So because company does clicks do not create any profit for any company, but sales create profit. Okay, any example? I can Not say. in my mind right now. Okay, I can say, Amazon is a good example in that case. Amazon is not looking forward for the any particular click, right? Amazon is a brand, right? He is generating, he is generating a number of clicks, right? He has a good traffic. He's a kind of having a monopoly in this industry. I think he's a he has come forward
as compared to kind of Flipkart, right? Yes, in terms of us clicks and sales, we can definitely get this example in a very good situation, right? Amazon, right? Amazon is high, greatly looking forward for the sales, right? He has a number of traffic, and definitely in that case we can say, I think it is clear. Amazon is a good example in that case. He's not looking forward for the clicks, right? Priyanka, Rahul, No, sir, but Yes. clicks. yeah, But why are we saying click? They are not looking for clicks. Like clicks is the first step for us to go ahead in terms of getting the leads or getting the sales, right? agree, If 100% nobody is agree. interested, then nobody is performing any CTA on the campaigns or the ads that we are running, then Mhm. we are never going to get the leads, or they'll never be get converted in order to get the sales. So I think click is a very 100% agree. important first step in order to get to the leads or the conversions, right? I 100% agree. But when we talk about why I'm saying for the clicks and why I'm saying the Amazon in this example, just because of Amazon has a huge traffic, right? Everyone knows the Amazon, right? I'm not talking about the campaign strategy. I'm not talking about that, just take example that Amazon is running a campaign, and over that I'm counting about the click, right? I'm just talking about the traffic which the Amazon is already having, right? A person who knows the Amazon, he directly opens the Amazon.in, right? They don't Yeah. do a Google, right? In that case, we can say Mm. that a person who is on Amazon, then definitely as a company, Amazon is looking forward that that customer should be converted, and that customer should do a certain purchase. That is the reason I put forward, the Amazon in this example. Yeah, No, you're absolutely, right. absolutely. You are Hmm. saying true that the click is important. But yes, when we are running a campaign, right? In that scenario, a first step should be a click. Definitely, But I think it matters in a small scale business when a brand like Amazon, like everybody knows Amazon, and when I also have to purchase anything, I directly go to the URL and go to right, the right, website. right. So I With don't really see their campaigns or click on it. You're right. 100% true, true, 100% true. Yeah. Okay. Anyone else? Anyone else want to add something in that case? किसी को ऐड करना है कोई पॉइंट इसमें, अगर मैं लीड या सेल्स में कंपैरिजन लेके चल रहा हूँ तो एनीवन? Okay. So second thing we can say, in a performance marketing, yes, ROI and the outcome. It is a these are the two major factors which we consider in a performance marketing. Even though, mark my word, the companies are not looking forward for the digital marketer. Even you can see over the LinkedIn, companies are highly looking forward for the person who is into a performance marketing, right? You just do a LinkedIn and search for the performance marketing guy. There's a n number of profiles you can see, and individuals or the candidates have highlighted that they have done these things. They have they have driven the certain kind of a KPI. They have driven the n number of traffic for the certain company. Even on my profile you can see I have clearly highlighted that I have met, that is 90% of success rate in terms of KPI. What is KPI? Key performance indicators. Key performance indicator. So make sure that what are the activity you are doing over your website or any certain advertisement which you are doing. Make sure you have a screenshot. You should have a data, so that you can you can showcase those particular data. You can highlight those particular pointers over the LinkedIn, so that companies or a recruiter can easily find your profile for the good role. I think it is clear, right? So make sure the domain on which you are working, make sure those domains should have a certain rank over the Google search page, and make sure those domain have a certain traffic, right? I think all of you guys are working on certain domain, that is your over the WordPress, right? All of you are working. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, ओके, sir. सो मेक श्योर कि आप लोग जो भी Yes. जो भी आप डोमेन पे काम कर रहे हैं ना, मेक श्योर करिए कि प्लीज उस पर ट्रैफिक लेके आइए, सो दैट आप लोग उसी ट्रैफिक को पोर्ट्रेट कर सके ओवर योर लिंक्डइन, सो दैट कंपनीज और रिक्रूटर कैन हैव अ गुड गुड हाईलाइट about you guys, and they can easily pick your profile, right? Okay.
Okay, so when we talk about performance marketing, there are the there are the main factors like advertiser, payment, platform, and the results. Right? Yes, they are the person who do a digital marketing process or digital marketing strategies. Right? Over the certain interface. Right? Basis of their results. Right? They get the payment. I think it is clear that this particular graph. It is clear to all of you. Yes, Yes, sir. there is a advisor, there is a payment, there is Yes, a sir. platform, there is a result. Yeah. So let me check. Yes, Priyanka, please. So, Go ahead. yes, I have a question. Like, in case of services, like a website which is providing a service, so is that important to drive traffic, like drive traffic to the website, or we can run campaigns and we can get the clients? What is more effective and how do people like how it will be judged? Okay. So yes, when we talk about the companies who are providing us services, definitely I can say for the every organization, either it is a small scale industry or it is a large scale industry or even a person who is doing a freelancing job. For every scenario, for each and every scenario, a person should run the campaign. And yes, uh, in terms of a services, there's a number of companies for Blinkit, like there's a Blinkit, there's a Zomato, there's a Swiggy. These are the service providing company, right? So they do a digital marketing, right? That is the reason we know, right? We know that in our certain areas, these are the companies who are providing a delivery in a 10 minutes, right? If they don't do kind of a campaign process, they don't do a brand awareness, then in that case we'll not be able to remember their name. So these are the best examples we can showcase in this question. I think that it is clear. Yep. Yes, sir. Okay. So service industry, digital marketing is again a service industry, right? It is not a product-based company. When we talk about when we talk about product-based industry, a product should be as we have already learned in our schools, right? There should be a tangible things. But yes, since we all shifted to a digital world, that is the reason the entire industry has been shifted to a service industry. So in a service, a customer is king, and definitely we have to, we have to serve them well. Okay, I think it is clear. Any question? Clear? No, sir. No, sir. Okay. Okay, so yes, when we talk about changes in the advertising industry, yes, we have started from traditional marketing, and yes, the over the period of time, yes, right, we have been shifted to a digital, right, and post COVID, the scenario has been drastically changed, right. Everyone knows how to do a digital marketing, and major companies, to trust me, uh, in our earlier days, the companies don't hire a digital marketing person, right? They always do digital marketing process via a third party organization. But in a current scenario, the companies are taking the help from the from the agencies, even though the companies are having the employees who are digiting who are who are doing a digital activities for their website. I think it is clear to everyone. They are the agencies, right, and they are the Yes, sir. they are the companies, they are the persons who are working in the organization. They also do a digital marketing activity for the organization. Let me talk about our scenarios. When we talk about I was in our times, right. There are n number of companies who are giving their advertisement to us, so that we can broadcast them, and we can showcase the advertisement to a number of customers. Just take example. In our earlier scenarios, we do a print activities like yellow pages, right, and you can say a newspaper activities, right, and we do kind of a pamphlet activities we do, right. But yes, over the period of time, right, the companies have been shifted to a digital. Now those advertisement which we are showcasing over the highways, like billboards, you can say, right, even though the activities uh, we do a advertisement over the newspaper, they have been shifted to a digital newspaper, right. Yes, scenarios has been changed, but yes, the companies have never forgot to to do advertisement for their product, because until and unless we are not able to showcase our product or services to our customer,
then in that case we are not able to survive in this organization, sorry, in this era, right? So it is very much important. We should do a digital activity. It can be over the LinkedIn, it can be on YouTube, it can be of any scenario, right? And trust me, as I have already mentioned, post COVID, right, industry has been changed, right? Every company know how to do a digital marketing, right? And just because of during the COVID we have seen that the person who was doing, who's the person who is having the ability, or they are having a certain skill set, they are survived, right? They have done the jobs, work from home, right? But yes, kind of a activity, those are related to a market, or those are related to a and core sales has vanished, kind of vanished. I think everyone clear in this point, Yes, sir. right? And Yes, sir. even though uh, why digital marketing why digital marketing has burst, just because of it don't require a coding, right? It don't require any HTML knowledge, it don't require CSS knowledge or any language. Just because of if you are able, or you have a reasoning skills, right? You have a good thought process, you know how to compare apple to apple, right? You know how to compare two different things. Like, just take example, if they are the certain, if they are the two images, right? And you are able to identify which image will, which image uh, kind of a showcase a good impact over the customer. It should, it if you have a those skill, in that case you can say that you can be a part of a digital marketing, right? Because in this industry you should know the requirement of the customer, right? You are sitting on a laptop, right? You should know how to how to drive the customer to your website, right? You should know how to drive the customer towards your lead form, right? You should know how to drive the customer toward to the end of the lead form, right? Right? If you are able, and if you are able to understand the customer mentality towards the purchase, definitely you can survive. Until unless if you don't have any of these skills which I have mentioned, certainly you will not be able to survive in this industry. Any point, any question in this case? किसी को कोई doubt, किसी को अभी तक इसमें clear? Yes, sir. Right? Okay, just take example. Okay, so we have a client called Asian Paints. I'm sharing a two URLs, right, with you guys. Please go through them, and we will try to find out the major differences between the marketing and and the performance marketing. Okay, so these are the two pages. One is this one, Asian Paints, and second one I'm sharing with you guys this. Okay, try to review all these URLs, and share your findings. ठीक है? और प्लीज मेक श्योर करेंगे आप लोग बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करें इन दोनों पेजेस को, ठीक है? फर्स्ट एंड सेकंड. Okay, sir. Okay, sir. मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, प्लीज जो यूआरएल्स मैंने अभी आप लोगों के साथ शेयर करें, इन्हें गो थ्रू करिए, ध्यान से ऑब्जर्व करिए, राइट? फाइंड आउट द डिफरेंसेस, राइट? व्हाई आई एम शेयरिंग दीज टू यूआरएल विद यू गाइस, राइट? ऑल्दो दीज आर फ्रॉम एशियन पेंट इटसेल्फ. ओके, सो प्लीज टेक योर टाइम, फाइंड करिए डिफरेंसेस क्या है और क्यों हम लोग इस चीज को Sir, एक्सेप्ट करते हैं. can I state one difference that's explicitly visible? या श्योर श्योर प्लीज. So first one is the landing page हम्म. for getting the leads, or anybody who wants to inquire. हम्म. Second one is the actual website. So if we want to, let's say, generate the leads, we want हम्म. to run some campaigns for the leads. So we are going to provide a URL of our landing page in order to get the information of those leads, like what is their name, email, mobile, PIN code, all of हम्म. that. हम्म. Because through that we have the leads data, we can contact them, we can push them for the conversions and whatever like possible things we can do. But that's like one difference that I see. Okay, perfect, perfect. Yeah. ठीक है मोनिका, थैंक यू सो मच, परफेक्ट आंसर. फर्दर एनीवन एल्स? सर सेम ही है. कुछ ऐड करना चाहेंगे आप इसमें? ओके, बाकी सब लोग कहाँ हैं? विवेक, टीना, सुनीता, सुजीत,
राहुल, पिंकी, मोनी, यस प्लीज आंसर सभी लोग। महक, खुशी। So the main difference can be हाँ, was told by Monica only. ओके, अभी भी डिफरेंसेस हैं। So yes, so first one, the landing page is for our good quality score that will decrease our CPC, ठीक है, and the second one is our website page that will show the entire process and entire information about our business. ओके, So the landing page is only for the lead that we can generate and give our uh, information about our plans and the information about our product. But when we go to our website, we can create everything here and we can connect with the customer better way so that they can understand about our product well. ओके, परफेक्ट, परफेक्ट, यस। फर्दर आंसर प्लीज। Sir, while Monica and Meenal both have shared almost everything that is to say about this, one thing that is we can say that landing page is mainly for the interest purpose. Like when a customer, if we want to know about a potential customer, if he or she is interested or not, we can share the landing page with them, and they can fill up this form, and the company will contact them, and then they will be redirected to the website page, which on which the customer can further explore and decide for themselves if they want to purchase the services, purchase the products, and so on. Okay, perfect, perfect. Anyone else? Ananya, Anurag, Ashwini? So in landing हाँ, in बताओ। landing page they are showcasing the this discount offer, whereas in this normal website page they are not showcasing any discount offer which is currently going Very nice. on our businesses. हम्म, ठीक है, बहुत Yes, अच्छे sir, and the कंटेंट। discount will attract people हम्म, and then they'll get the lead. So ओके, a landing page is for that only. परफेक्ट, They परफेक्ट get फाइंडिंग, ठीक है। और आंसर्स प्लीज। देखिए अभी ना, ट्रस्ट मी, अभी बहुत सारी चीजें इसमें आनी है, राइट? तो ट्राई टू फाइंड आउट कि ऑल्दो आप लोगों ने सारी चीजें पढ़ी भी होंगी, मैं ये नहीं कह रहा आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, राइट? बट जब भी आप कोई पेज देख रहे हैं, मार्क माई वर्ड, मैं अगर आपको ये बोल रहा हूँ ना कि हम लोगों ने एशियन पेंट्स का कैंपेन चलाया है, आप इजीली चेक कर सकते हैं, द पोर्टफोलियो विच आई एम हैंडलिंग, राइट? बहुत बड़े बड़े अकाउंट्स मेरे पास रहे हैं, राइट? इवन आई हैव हैंडल अ 1 CR फॉर द 1 ईयर, वो भी अकाउंट मेरे पास था, राइट? 1 CR तक का बजट है। लिव प्योर, आई थिंक सब लोगों को पता होगा। लिव प्योर वॉज विद माई क्लाइंट, राइट? होम टाउन वॉज माई क्लाइंट, राइट? इवन दो रॉयल टच वॉज माई क्लाइंट, अटनिया इज माई क्लाइंट, even though Tata Pravesh is my client. So these are the major client, when I talking about, these are the clients, trust me, they are looking forward for the, good landing page. I think सब लोगों को ये समझ में आ रहा है, लैंडिंग पेज है, ये बैनर नहीं है, राइट? ये क्लियर है सबको? ये जो इमेज आप लोग Yes, देख रहे हैं, sir. राइट, ये लैंडिंग पेज का स्क्रीनशॉट है। इट इज नॉट Yes, अबाउट sir. बैनर, राइट? बैनर भी मैं अभी आपको दिखाऊंगा, बट ये दीज आर द लैंडिंग पेजेस। ये मैंने हाईलाइट करके रखे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ आई हैव डिवोटेड अ एन नंबर ऑफ टाइम, एन नंबर ऑफ आवर्स, राइट? Basis of that, basis of discussion with the client, basis of discussion with my company, basis of discussion with my designer team, we have generated those landing pages. And why I am highlighting those pages, just because of, these are the samples, through which I have generated a good quality of leads, right? So that is the reason I have highlighted them, you know. So these are the landing pages, right? And why I am talking about, we find out the major differences, just because, वी आर टॉकिंग अबाउट परफॉर्मेंस मार्केटिंग, राइट? अनटिल अनलेस किसी कस्टमर ने क्लिक करके लैंडिंग पेज पे वो नहीं गया, राइट? और अगर वो आया लैंडिंग पेज पे और उसने लीड सबमिट नहीं करा, सो उस पे देयर द एन नंबर ऑफ फनल प्रोसेसेस आर देयर, राइट? कस्टमर के क्लिक करने से लेके उसके लैंडिंग पेज पे जाने तक, प्लस लैंडिंग पेज पे आने से उसके लीड सबमिट करने तक एक फनल प्रोसेस होता है, राइट? अगर कहीं पर भी, इफ देयर आर सर्टेन गैप्स, if they are the certain glitch, or if there is a kind of a glitch which is related to a tech, definitely it impact over your campaign, it spoil the budget, it spoil up even, decimal penny as well, right? Okay, just take example. When we are talking about, find out the differences in between these two pages. Yes, first is the website, second one is the landing page, right? आर मेन फोकस लैंडिंग पेज पे यही होता है कि यार हम लोग कोशिश यही करें कि हम लोग Sir, can you
Can you please hide this meeting window that's open on Okay, the screen? done. Okay, so when we say, when we say why we use a landing page, just because of, uh, so please drop the link. Okay, मैं दोबारा शेयर करूँ, एक मिनट दीजिए प्लीज. I can share those. Yeah, I can share yeah. those. You can continue. Okay, so when we talk about, the major differences between these two URL, first is a website, second one is a landing page, right? I think it is pretty much clear to all of you that, when we say a Yes, landing sir. page, yeah, be voice clear सबको? Yes. Okay, so Yes, sir. okay, so when we talk about, landing Yes, page, sir. okay, so when we talk about a landing page, obviously there are the less CTA, right? अगर आप clearly यहाँ पे check करेंगे तो I think सब लोग एक चीज को observe करिए, CTA यहाँ पे एक ये है download brochure का, right? एक CTA अगर आप check करोगे तो एक यहाँ पे read terms and condition डाला हुआ है, और सबसे ऊपर एक ही CTA है, राइट? यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो ये इमेज का है, इस पे कोई बट इट इज नॉट अ क्लिकेबल, राइट? तो मेजर सीटी अगर आप देख रहे हैं, इट कम्स सबसे पहले आपको दिख रहा है जो कि ये वाला है, इंक्वायरी नाउ. इट इज क्लियर, लेस डिस्ट्रैक्शन, राइट? एंड सीटीए का जो पोजीशनिंग है, इट शुड बी एट दैट लोकेशन वेयर द पर्सन वंस open a certain landing page, it should be visible on a front screen or a first screen, right? तो सीटीए इन्होंने यहाँ पे डाला हुआ है. अब मार्क माई वर्ड, जो मैं चीज एक्सप्लेन करने वाला हूँ सबको, ठीक है, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था आप लोगों से, आप लोगों ने वो आंसर्स मेरे को, सॉरी सॉरी टू से, आप लोगों ने वो आंसर कहीं ना कहीं दिए हैं, लेकिन जो मैं सुनना चाह रहा था वो आंसर्स मेरे पास नहीं आए. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मेजर डिफरेंसेस की बात कर रहा हूँ, ट्रस्ट मी, लैंडिंग पेजेस के ऊपर हम लोगों ने ट्रैकिंग सेटअप्स करे हुए होते हैं, राइट? अगर आप लोगों ने बहुत ध्यान से अभी स्टार्टिंग में सेशन सुना हो, मैंने क्लियरली हाईलाइट करा है ट्रैकिंग वाला पार्ट. सबको याद है ये चीज? आई टोल्ड, राइट? मैंने ये चीज बोला भी था, ट्रैकिंग, Yes, sir. राइट? मार्क माई वर्ड, Yes. मार्क माई वर्ड, 100%. प्लीज इसे जॉट डाउन करके रख लीजिए, लिख लीजिए अपने पास. अगर आप लोगों को परफॉर्मेंस मार्केटिंग करनी है, योर ट्रैकिंग शुड बी इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम द डे वन. जीरो से आपका ट्रैकिंग सेटअप होना चाहिए. इवन इट इज अ वेबसाइट, इवन इट इज अ कैंपेन लेवल, इवन इट इज ऑन ऑन एनी इंटरफेस, ट्रैकिंग आपका शुरू में ही एड ऑन हो जाना चाहिए. इट शुड नॉट बी आप लोगों ने वेबसाइट डेवलप कर लिया, सबसे लास्ट में जाके आपको पता लगता है, अरे यार हम लोगों ने इस पर ट्रैकिंग सेटअप नहीं करा, राइट? इसका इम्पैक्ट क्या होगा? आई थिंक सबको क्लियर है, राइट? आप लोगों ने इतना एफर्ट डाला, राइट, बट रिजल्ट एट द एंड शुड बी जीरो, बिकॉज आप लोगों ने अपनी परफॉर्मेंस को आप लोग मॉनिटर नहीं कर पाए. स्टेटमेंट क्लियर है? येस, नो, प्लीज एक्नॉलेज. So tracking, with Yes. tracking you mean whatever action is happening on a certain page. राइट, Like we need to have these stats, we need to have the राइट, details of that, right? So राइट, that राइट. we can track it. Right. Even Okay. though you have implemented a Google Analytics, right? You have implemented a Pixel, you have implemented a Google code as well. You have implemented any code which is provided by the third party too, right? It should be implemented. Clear? Right? Okay. One more thing. I think सबको remarketing पता है? Retargeting, remarketing सबने सुना होगा, Yes, sir. right? Yes, sir. Yes. Yes, sir. मार्क माई वर्ड, Yes, sir. मार्क माई वर्ड, अगर आपने डे वन से अपनी साइट के ऊपर ट्रैकिंग सेटअप नहीं करा, अपनी लैंडिंग पेज के ऊपर ट्रैकिंग सेटअप नहीं करा, या अपनी वेबसाइट के ऊपर नहीं करा, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप लोगों ने अपनी साइट को बनवा रहे हैं, जस्ट टेक एग्जांपल, इट टुक अ 1 मंथ, राइट? एक साइट को बनने में आपने पूरा 1 महीना लगा दिया, राइट? ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो भी ट्रैफिक आपके पास आ रहा है, अगर आपने उसके अंदर ट्रैकिंग सेटअप नहीं करा, राइट, रीमार्केटिंग का कोड आपने सेटअप नहीं करा, इन दैट केस क्या होगा, आपकी वो ऑडियंस बिल्ड नहीं हो पाएगी. सब लोग एग्री करेंगे, राइट? अगर एक भी ऑडियंस आ रही है, दो भी ऑडियंस आ रही है, वो डेटा नहीं बन पा रहा है. तो मार्क माई वर्ड, फ्रॉम द डे वन, जैसे ही आपने अपना लैंडिंग पेज क्रिएट करा, जैसे ही आपने अपना वेबसाइट क्रिएट करा, फ्रॉम द डे वन यू शुड इम्प्लीमेंट द एंटायर ट्रैकिंग सिस्टम ओवर योर वेबसाइट, सो दैट अ सिंगल कस्टमर वो आपसे स्किप ना हो. आई थिंक ये क्लियर है सबको? यस, नो? Sir, I have a small doubt. Like, या, आपने कहा अभी कि not a single customer should be left out. राइट, बट एक तो ऐसा होता ही है ना, लाइक हमें तो एक एवरेज पकड़ के चलनी पड़ती है ना, कि सपोज लैंडिंग पेज पे लेट्स से 10 लोगों ने इंक्वायर किया, ठीक है, बट
वी हैव टू हैव दिस assumption लाइक 10 में से 10 लोग पूरी तरह से कन्वर्ट तो नहीं होंगे, लाइक 2 या 3 ही होते हैं जनरली। राइट राइट। तो मतलब अगर हम ट्रैकिंग फॉर एग्जांपल हम लगाते भी हैं, तो मतलब अल्टीमेटली भी तो जाके तो हमें तो यही दिखाई देगा ना कि डेटा मतलब कन्वर्शंस एक्चुअली बहुत ही कम हो रहा है। तो 100% मतलब एग्री। तो इसका तो इसका मतलब ये रिजल्टेंट क्या निकला, मुझे समझ में नहीं आया ओके इसको फॉलो ओके, इसका मैं आंसर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोग को सबको ये चीज़ पता होगा, गूगल के अंदर जब आप रीमार्केटिंग लगाते हो उसमें एक ब्रैकेट सेटअप है कि 1000 विजिटर्स होने चाहिए तभी रीमार्केटिंग एक्टिवेट होगा। Yes. राइट, आई थिंक अभी क्लियर है। वो एक एक कस्टमर ने अगर शुरू में 1000 कंप्लीट कर लिया, तो हम जैसे ही हमारा लॉन्च होगा कोई प्रोडक्ट हमारा लॉन्च होगा, तब तक हमारे पास ऑडियंस बन चुका होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि वो 1000 के 1000 कस्टमर मेरे प्रोस्पेक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे, बट यस, वी आर एबल टू रन द रीमार्केटिंग कैंपेन ओवर द गूगल। अभी क्लियर है? मेरा वो यस बकेट सर। फिल हो जाएगा, राइट? बकेट के बाद जो भी फर्दर ऑडियंस मेरे पास आ रही है, एटलीस्ट हो सकता है वो मैं कन्वर्ट कर लूं। लेकिन जब तक वो बकेट फिल नहीं होगा ना मेरा, तब तक मैं रीमार्केटिंग चला ही नहीं पाऊंगा। देयर इज अ काइंड ऑफ अ लूप होल। जैसे फेसबुक के ओके अंदर सर। है। फेसबुक के अंदर क्या है कि इनिशियल लेवल से स्टार्ट हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आता है सर। लेकिन गूगल के अंदर ब्रैकेट लगा हुआ है। सो इन दैट केस ट्राई टू इम्प्लीमेंट द ट्रैकिंग इनिशियल लेवल, सो दैट आप लोगों को जब भी आपका कोई प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है, राइट, इट शुड नॉट बी कि आपके पास उस समय ऑडियंस का डेटाबेस ना हो। ओके, जस्ट एक एग्जांपल, एक और एग्जांपल मैं ऐड कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल फलैंको सबको पता है। ओपन दिस डोमेन, मैं एक बार सबको चैट पे शेयर करूँ, ओपन करिए सर प्लीज। और ये भी मेरा क्लाइंट था, मैं तो इवन इसके क्रेडिट्स भी आपको दिखा सकता हूँ, मैंने पर्सनली बनवाया। फलैंको प्लीज ओपन। थोड़ा सा एक्सप्लोर करिए, व्हाई आई एम शेयरिंग दिस विद यू गाइस। ट्राई टू एक्सप्लोर कि क्या है, क्या रीजन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सामने ये एग्जाम्पल है, अगर आप देखेंगे तो। आप प्लीज एक्नॉलेज करिएगा अगर अभी तक सबको क्लियर है, राइट? सर ओपन किया। ठीक है, बहुत ध्यान से गो थ्रू करिए एक बार प्लीज सभी लोग इस पेज को। कंपनी किस चीज की है, व्हाट आर द प्रोडक्ट्स, राइट, व्हाट आर द सर्विसेज दे आर फर्नीचर ऑफरिंग। फर्नीचर प्रोडक्ट्स, फर्नीचर प्रोडक्ट एंड फर्निशिंग्स ओके, सो फर्निशिंग्स। दैट इज अ रेंटल फर्नीचर, राइट? अच्छा, रेंटल फर्नीचर, ओके यस, रेंट फर्नीचर। रेंट लेकिन सर फर्नीचर। इनके यहाँ पे तो बाई फर्नीचर का भी ऑप्शन है। Agree, इट्स 100% नॉट agree, जस्ट। 100% agree. But they have started their company from the rental. Now they have been shifted ओके to a buy furniture. ओके ओके। Just because of, they have cracked the market, because market में बहुत सारे Sir, players हैं। it's not opening, sir. The site can't be reached. नहीं नहीं चल रहेगा, फॉरलैंको.com चल रहा है, चेक करिए एक बार। फॉरलैंको.com सर इट्स ओपनिंग सर। ओके। और थोड़ा एंड सा या and they have also added appliances. So is it new, like, or it was an like, again a same scenario, they are offering the appliances on rent as well over, okay, in or rent? you can Okay, directly buy। और मेक श्योर प्लीज सभी लोग सेशन के आखिरी तक रहें, क्योंकि डेटा अभी आपके पास आएगा, राइट, जिसमें मैं आपको बहुत सारे सिनेरियोज दिखाऊंगा। दे आर द टारगेट्स विच वी गाइज ट्राई टू अटेन, राइट, वी ट्राई टू फुलफिल दैम ऑन ड्यूरिंग आवर डे टू डे एक्टिविटीज। सो मेक श्योर सेशन के एंड तक रहिएगा, क्योंकि डेटा जो अभी आपको मिलेगा, इट इज डायरेक्टली फ्रॉम द इंडस्ट्री, राइट, क्या हो रहा है और क्या अचीवमेंट्स होती है मार्केट में, क्या क्या करना पड़ता है। ओके ओके, सो स्टार्ट करते हैं। देखिए, लेट मी वेरी क्लियर, अगर आप इसमें एक चीज ऑब्जर्व करें, जैसे इसे ओपन कर, इसे इस डोमेन को व्यू करवाने का सिंपल सा रीजन ये, अगर आप चेक करोगे, दे हैव हाइलाइटेड अ माउंसून, राइट, दे हैव हाइलाइटेड, दे हैव यूज्ड आईपीएल क्रिएटिव एज वेल। अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे तो आरसीबी यहाँ पे डला की फोटो डाला हुआ है। सो यस,
अगर हम एक सिनेरियोस लेके चलते हैं, फॉर एग्जांपल अगर कंपनीज को मानसून को टारगेट करना, राइट, दे आर टारगेटिंग मानसून वेदर और दे आर टारगेटिंग विंटर वेदर, देन डेफिनेटली कंपनीज अपनी सारी एक्टिविटीज को 6 से 7 महीने पहले स्टार्ट कर देते हैं. इट इज नॉट अबाउट हमारा कोई इवेंट आ रहा है या हमारा कोई पर्टिकुलर ओकेजन आ रहा है, हम तब उस पर काम कर रहे हैं. दैट इज द रीजन कंपनीज की सारी एक्टिविटीज, सारे स्टेप्स, सारे एक्शंस पहले से प्री प्लान्ड होते हैं, पहले से लाइंड अप होते हैं कि हम लोगों को क्या चीज करना चाहिए, क्या चीज नहीं करना चाहिए, राइट. दैट इज द रीजन आई एम सेइंग कि अगर आप अपनी साइट पे कोई भी काम कर रहे हो, इवन यू आर क्रिएटिंग योर लैंडिंग पेज, इवन यू आर क्रिएटिंग योर एडवर्टीजमेंट, मेक श्योर हर चीज आपका पहले से रेडी होना चाहिए. अभी स्टेटमेंट क्लियर है? मैंने ये चीज क्यों बोला कि आपके ट्रैकिंग सेटअप सारा होना चाहिए, आपके क्रिएटिव सारे रेडी होने चाहिए, आपके ऑब्जेक्टिव्स क्लियर होने चाहिए, राइट. इवन दो यू नो ऑब्जेक्टिव इन टर्म्स ऑफ आपको उस पर्टिकुलर सीजन में या उस पर्टिकुलर टेन्योर के अंदर आपको कितना लीड कवर करना है, आपको कितना सेल्स कवर करना है, एंड व्हाट शुड व्हाट शुड बी योर मेजर टारगेट्स यू शुड अचीव, राइट. इट इज नॉट कि ठीक है, आ रहा है कोई पर्टिकुलर इवेंट आ रहा है, आप उसके 1 या 2 दिन पहले आप उस पर सारा सेटअप कर रहे हो, ये प्रोसेस नहीं चलता मार्केट के अंदर, राइट. दैट इज द रीजन मैं आपको क्लियर बोल रहा हूँ कि आप लोग हर चीज को पहले से ही इलेबोरेट करके चले कि आपने जब भी कोई स्टेप लिया है, आपने अगर कोई भी पर्टिकुलर वेबसाइट को ड्रॉ करा है, इट शुड बी फुलफिल विद ऑल द ट्रैकिंग एस्पेक्ट, इट शुड बी फुलफिल विद ऑल द कोडिंग विच इज नीडेड. अभी क्लियर है सबको? आई थिंक ये सबको पॉइंट क्लियर है. यस, नो? Yes, sir. राइट. ओके. अब एक चीज थोड़ा ध्यान से समझिएगा, जो मैं चीज में ऐड करने जा रहा हूँ, ठीक है. Sir, can you come again with the last point? Like, what's the crux of that? Like, कुछ भी event आ रहा है तो we plan in advance. राइट. इट शुड बी प्लान इन एडवांस एंड मेक श्योर कि अगर कोई भी चीज अगर आपकी आ रही है, तो आपने अपनी जितनी भी स्टेप्स है, राइट, कैंपेन की जो जो मेजर स्टेप्स है, आपके ऑब्जेक्टिव्स क्लियर होने चाहिए, आपके टारगेट्स क्लियर होने चाहिए, आपको क्या क्या लीड डिलीवर करना है, कितना क्वालिटी ऑफ लीड आपका डिलीवर करना है, कितना वेबसाइट पे ट्रैफिक जाना है, कौन कौन से क्रिएटिव्स आपके जाने हैं, और वो ड्यूरेशन कितना होना चाहिए. दोज पॉइंटर्स शुड बी क्लियर बिफोर setting a certain campaign, before creating a particular website. Sorted? Right? Even Yeah. right? Even one thing I just want to add, mark my word, अगर हम लोग किसी भी क्लाइंट का कोई भी लैंडिंग पेज भी क्रिएट करते हैं ना, तो मेक श्योर करते हैं हम लोग उसकी ऑब्जेक्टिव पहले से डिफाइंड हो. जैसे बहुत लोगों ने भी हाईलाइट करा था कि इसमें ऑफर डला हुआ है, लेकिन वेबसाइट में ऑफर वाला पार्ट इनिशियल लेवल पे नहीं दिख रहा, जस्ट बिकॉज ऑफ लैंडिंग पेज को इतना प्रिसाइज बनाया जाता है सो दैट देयर शुड बी अ कन्वर्जन. लैंडिंग पेज का ऑब्जेक्ट ट्रैफिक जनरेट करना नहीं होता. आई थिंक ये चीज सबको पता है, राइट. द कंपनीज आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द सेल्स एंड क्लिक्स, सॉरी, सेल्स एंड फॉर द लीड्स, राइट. कंपनीज आर नॉट लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द क्लिक्स ऑन अ लैंडिंग पेज, राइट. इफ दे आर डूइंग अ परफॉर्मेंस मार्केटिंग, उनका मेन एस्पेक्ट यही होता है कि वो लीड निकाले. अगर वो मेजर ब्रांड्स की अगर मैं बात कर रहा हूँ, यस, अगर कोई स्टार्टअप है तो हो सकता है उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्लिक्स भी हो, क्योंकि उसके ऊपर ट्रैफिक ही नहीं है अभी, राइट. ओके. एक चीज मैं और ऐड कर रहा हूँ, मार्क माई वर्ड, ये चीज शायद आप लोगों ने मुझे नहीं पता अभी तक आप लोगों ने चीज ऑब्जर्व करा है नहीं करा, लेकिन ठीक है, मैं ऐड कर रहा हूँ उसमें. जस्ट एक एग्जांपल, मैं लीड फॉर्म सबमिट कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए प्लीज, ठीक है. थोड़ा सा ध्यान से देखिए, मैं थोड़ा सा एरर भी मार्क कर रहा हूँ इसके अंदर ताकि गलतियाँ हो, ताकि मैं आपको हाईलाइट भी कर सकूँ कि इसमें क्या चेंजेस थे, ठीक है. बहुत ध्यान से प्लीज. ओके. सो नेम पे कोई एरर नहीं आया, आई थिंक सब लोगों को दिख रहा है ये चीज, राइट. Yes, sir. राइट. ईमेल पे एरर है, क्यों? क्योंकि एट द रेट नहीं लगा हुआ, राइट. एट द रेट इज मिसिंग, राइट. मैंने इसे ऐड करा, दैट मीन्स दीज आर द वैलिडेशंस, राइट. अब आप मेरा पॉइंट समझिएगा. अब अगर मान लीजिए कोई ये लीड सबमिट हो रहा है, तो आई थिंक मैं ये बोल सकता हूँ उस लीड के अंदर कोई एरर नहीं होगा, अगर इतने Yes, sir. वैलिडेशन मैं लगा रहा हूँ तो, राइट. अब बहुत ध्यान से समझिए, दैट इज द रीजन कंपनीज आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द गुड क्वालिटी ऑफ लीड, सो दैट अगर एक भी सिंगल लीड जा रही है उसमें ईमेल आईडी गलत नहीं होना चाहिए, एक भी लीड जा रहा है उसमें मोबाइल नंबर गलत नहीं होना चाहिए. मोबाइल नंबर अगर आप चेक करेंगे, तो अगर मैं इसमें 9 डिजिट सबमिट कर रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, तो ये एरर दे रहा है, राइट. जैसे ही मैं इसमें 10 डिजिट सबमिट करूंगा, ये एरर नहीं देगा. तो दीज आर द वैलिडेशन. ये क्यों लगा रहे हैं हम लोग? सो दैट क्वालिटी ऑफ लीड डिलीवर हो. मार्क माई वर्ड, ट्रस्ट मी, हम जो डे टू डे एक्टिविटीज करते हैं, वी ऑलवेज सेंड द रिपोर्ट टू अ कस्टमर विद द लीड डंप, so that they can initiate the call
from their end, they can pitch their product to a customer so that वो customer convert हो जाए. अगर हम लोग कस्टमर को मोबाइल नंबर ही गलत दे रहे हैं तो व्हाट विल बी द इम्पैक्ट, क्या होगा उस केस में, सिनेरियोज क्या होंगे? हाँ जी, मोबाइल नंबर ही अगर गलत है तो ट्रैक करने में बहुत That, प्रॉब्लम that होती है। lead will not be counted, right? Because राइट, the लीड data विल is So नॉट जो बी मेन काउंटेड. पर्पस है इज ट्रैकिंग एंड वो ही नहीं हो पाएगी, सो देयर इज एग्जैक्टली. नो और पॉइंट. इवन वो कॉन्ट्रैक्ट भी कैंसिल हो जाएगा अगर हम लोग ये सिनेरियोज लेके चलेंगे. हम लोगों ने क्वालिटी ऑफ लीड पे फोकस नहीं करा, देन डेफिनेटली इन दैट केस कस्टमर विल नॉट रिन्यूअल देयर पैकेज, वो उस केस में एग्जिट कर जाएगा. अगेन एक और चीज बहुत ध्यान से देखिएगा, दैट इज अ मेजर एस्पेक्ट. फॉर एग्जाम्पल मैंने पिन कोड लिखा 2301, एरर आ गया. 6 डिजिट का पिन कोड होता है, आई थिंक सबको पता है ये चीज, राइट? अगर मैं इसमें कोई राइट, अब अगर मैं इसमें 6 डिजिट का कोई पिन कोड डाल रहा हूँ तो वो इनवैलिड नहीं होगा, राइट? फॉर एग्जाम्पल 20130, एक डमी लिया मैंने, यहाँ पे एरर नहीं दिया. वाई एशियन पेंट इज आस्किंग फॉर द पिन कोड? पिन कोड तो सभी में मैंडेट नहीं होता ना, एशियन पेंट्स क्यों ले रहा है पिन कोड? सर सो दैट दे कैन ट्रैक कि कहाँ की जगह पे ये सब हो रहा है, बिकॉज उनका मल्टीपल स्टोर्स मल्टीपल जगहों पे है, तो कस्टमर का डेमोग्राफिक देखने के लिए दे वांट देयर पिन कोड्स. ओके ओके ओके, एक चीज मैं और ऐड करूंगा, सब लोग भी बहुत ध्यान समझेगा. व्हेन वी टॉक अबाउट एशियन पेंट्स ना, Asian Paint is a big company, right? They have handed over the franchises to a different vendors, right? They are not looking forward for the customer, they who directly want a paint service from them, right? They have franchised, right? They have franchised all the activities, right? That is the reason why they are asking for the pin code, just because the basis of the pin codes, right? Basis of the the lead they have received from the certain areas, they deliver those particular lead to a certain branch or certain franchisee, so that they can reach out to a customer. For example, if I am sitting in a Delhi, right? We get the lead from the Kolkata, then definitely we will try to send those particular lead to a franchisee who is handling Kolkata team, then definitely there are chances. There are the more chances for the conversion. I think it is clear. Yes, Yes, sir. right. That Yes is sir, that yes. is that is the Sir, reason, I right? have one question. Yeah, please. So, can you go back to that form that you were showing for Asian Yes, Paints? yes. Yeah. So, I could see that on this form there are field level validations in terms of the format of the value which is given as an input, Right, right? But since this is .com, which is a universal domain, right? Anybody across like different countries can use this landing page. right. If I take example of US, they don't follow the format of 6 digits in the zip code. Agree. They do have 5 digit, right? Right. So how will we tackle a situation like that? Okay. So in that case, if our targeting audience is from different countries, then based on that, we will generate a landing page. We will create a campaign setup according to them, right? It should not be, we will use the same landing page or the same parameters which we are handling, which we are doing in India, right? Or maybe we introduce country attribute as well in the form, right? Right, right, And right, based on the country, we introduce the format validation on the zip right, code. right. Trust me. When I was in US, to be very honest, I have never seen a person who is doing a Instagram, who is doing a Facebook, right? They always do a Snapchat, right? Even in a US, they don't do Google, right? They always do, Bing. They use a Bing, right? So there's a difference, right? If we target the audience who is living in Canada, who is living in Australia, who is living in US, then definitely based on that, we will create a landing page in a different scenarios. We will consider this different strategies. We will not consider the strategy which we are using in India. Definitely we will differentiate them, right? So it is not कि हम लोग same चीजें use करेंगे हर जगह पे, right? Okay, clear सभी को ये चीज? Yeah. Yep. Okay. So yes, uh, I think everyone can see, over the URL they have set the tracking. सबको पता है ये चीज क्या होती है? ये ट्रैकिंग कैसे लगा हुआ है? कौन एक्सप्लेन करेगा? और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आप लोगों के आंसर आए. अगर आप लोगों ने कोर्स करा, आपको पता होना चाहिए चीज. What is this? It is a UTM source. It is a UTM source, right? So I think it is pretty much clear. Before activating the campaign, the guy has already implemented a UTM just because of, to track the data.
and to track the sources. So अगर आप लोग इसमें चेक करेंगे क्या क्या चीज़ें आइडेंटिफाई हो रही है, एनीवन क्या क्या चीज़ें आइडेंटिफाई हो सकता है इससे? यूआरएल को ओपन करिए प्लीज और गो थ्रू करिए क्या क्या चीज़ें आइडेंटिफाई हो सकती हैं इससे। और ट्रस्ट मी बहुत सारे सिनेरियोज आते हैं, डे टू डे बहुत चैलेंजेस हैं, इतना आसान नहीं होता कि हम लोगों ने लिया ट्रैकिंग लगा दी कैंपेन चल गया ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता जी। मार्केट में सिनेरियोज बहुत डिफरेंट है, राइट। अ कस्टमर एक एक पेनी के लिए आपसे रिपोर्ट मांग लेता है। अगर आपने उसका एक 10 रुपये भी खर्च करा, इवन यू स्पेंड 100 रुपीज, तो वो उसका भी डेटा आपसे मांगेगा, राइट। देयर शुड बी अ प्रॉपर रिपोर्टिंग प्रोसेस हर जगह पे। ओके, सो क्या क्या ट्रैक हो रहा है, एनीवन? So conversion clicks, okay, how many people are visiting our landing page, how many one are clicking on our search ads, and by this we can also get okay, what action the customer has taken on a landing page, whether he filled a query but not submitted the query, Right. So this kind of a tracking can be done. Perfect. And even we can see the objective, that is a Google search brand awareness campaign इसने run करा हुआ है, source में clear लिखा हुआ है, medium, and campaign ID is also there, right? Even UTM campaign name is also there, paid campaign है, SPS campaign का name दिया हुआ बंदे ने, even campaign ID उसने हर चीज मेंशन करी, आप चेक कर सकते हो, brand awareness का campaign है, हर चीज उसने डाला हुआ है यहाँ पे। बस ये नेमिंग थोड़ी गलत है, यूपी बोर्ड रिजल्ट पता नहीं क्या डाला, ये गलत है इसके अंदर। एड ग्रुप मेंशन करा हुआ है यहाँ पे, सो यस सारे पैरामीटर्स बंदे ने डाले हैं, राइट। तो मेक श्योर ये सारी चीजें इसलिए करी जाती है सो दैट वी कैन ट्रैक आवर परफॉर्मेंस, व्हाट वी आर डूइंग, एंड एट द एंड व्हाट द रिजल्ट वी आर गेटिंग, राइट। तो ये सब कुछ मॉनिटर करा जाता है। ओके, आई थिंक सबको क्लियर Sir, है। I'm not able to recall this concept in our previous sections. Like, what is UTM? Okay, anyone, what is the UTM? Yes, sir. We have not been gone through this Okay. Yes particular sir, topic. I think हमें नहीं करवाया, हमें नहीं करवाया UTM सर ये UTM टॉपिक। हमारे लिए थोड़ा नया। कोई इशू नहीं, यस सर। दैट इज द UTM। अगर आप चेक करेंगे UTM कोड, UTM पैरामीटर अगर आप सर्च करेंगे तो एंड लगेगा। इसका मतलब कैसे बनाया जाता है ये सब भी आई डोंट रिकॉल कोई सर दिक्कत ने नहीं, करवाया। कोई दिक्कत नहीं, मैं ऐड कर देता हूँ क्योंकि हम तो डेली बना रहे हैं, हमें पता है सिनेरियोस क्या है। इस यूआरएल को ओपन करिए प्लीज जल्दी से। तो आप लोग अभी ट्रैकिंग, ओके नो वरीज, आप इसे ओपन करिए प्लीज सभी लोग। और मैं दोबारा रिपीट करूंगा, प्लीज डोंट ट्राई टू एग्जिट, सेशन के से पहले एग्जिट कोई ना करें क्योंकि अभी डेटा आएगा। मार्क माई वर्ड, यू कैन फील द हीट, यू कैन फील द प्रेशर जो हम लोग डेली बेसिस पे डेली एक्टिविटीज में फील करते हैं, राइट। तो मेक श्योर स्टे ट्यून्ड, राइट। ओके, ओपन करिए यूआरएल। Yes, sir. Done. Done. Okay, so just take example. I have a website called एक डमी डोमेन मैं ले रहा हूँ, मैंने उस डोमेन को यहाँ पे सबमिट करा। अच्छा हाँ, बिफोर सबसे पहले सारी चीज ध्यान रखिएगा, इसमें जब भी आप लॉग इन करें मेक श्योर आप गूगल एनालिटिक्स की आईडी से आप लोग लॉग इन करिएगा। इट शुड नॉट बी कि आप लोगों ने एक रैंडम कोई भी जीमेल आईडी ली उससे लॉग इन कर लिया। आईडी शुड बी और योर लॉग इन शुड बी सेम विच यू आर यूजिंग इन गूगल एनालिटिक्स। आई थिंक इट इज क्लियर। गूगल एनालिटिक्स, यस Yes, sir. राइट। आईडी सेम होना चाहिए लॉगिन का आईडी, राइट। ओके, सो जस्ट टेक एग्जांपल, आई एम अज्यूमिंग कि आप लोगों का ये डोमेन है जो आप लोगों ने बनाया है, ठीक है। एक रैंडम मैं आपको बता के चल रहा हूँ। कैंपेन आईडी आपको अपने गूगल कैंपेन में से मिल सकता है। अभी के लिए फॉर एग्जाम्पल मैं एक डमी आईडी डाल रहा हूँ, इट इज नॉट मैंडेट क्योंकि इस पे एस्ट्रिक मार्क नहीं लगा हुआ, ठीक। तो आप इसे स्किप भी कर सकते हो। अगर आपको अपने यूआरएल में दिखाना है तो आप इसमें मेंशन, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे सबमिट करा 45678 और 5, दैट इज अ कैंपेन आईडी, जस्ट अ डमी आईडी मैंने लिया है, ठीक है। कैंपेन सोर्स, इफ आई विल यूज दैट पर्टिकुलर यूआरएल which will be generated right over the Google, then definitely I will mention that is a Google source CPC, right। कि मैं ये जो जो ट्रैफिक होगा ये मेरा गूगल के थ्रू है, तो मैंने वहां पे वो कीवर्ड ऐड करा, दैट इज अगेन दीज आर द कीवर्ड्स जो हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे गूगल लिखा। मीडियम शुड बी इफ आई एम यूजिंग अ सर्च कैंपेन, इफ आई एम यूजिंग अ गूगल डिस्प्ले कैंपेन, इफ आई एम यूजिंग दैट पर्टिकुलर यूआरएल ओवर द मेटा, बेसिस ऑफ दैट मैं उसकी नेमिंग यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग करूंगा। फॉर एग्जाम्पल आई एम यूजिंग दैट पर्टिकुलर यूआरएल ओवर द मेटा, सो आई मेंशन इट एज अ मेटा। मेटा शुड बी वेरी प्रिसाइज, फॉर एग्जाम्पल फेसबुक, ठीक है। सिर्फ नेमिंग करा मैंने इसका campaign name, campaign Sir, name. Yeah. sir, 1 second. Sir, place you mentioned the campaign source. We will mention the keyword that is we are using for this particular campaign, right?
nahi, campaign source is like, that if we are asking, if we are trying to monitor the source of a particular traffic, right? For Mhm. example, the URL which will be generated right now, right? If we are using that particular URL for the Google campaign, we will mention as a Google, Okay. 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 right? All right. ठीक. Okay. Okay. So further, we mention the campaign name. So we will put the same name which we are using in our Google Ads interface. For example, I have submitted as a search ads, and it is website name is GT Sub, right? That is a campaign name. So okay, yes, Shruti, yes, query please, बताएं. Sir, can you repeat this part? Yeah, sure. What we have to do? ठीक है. So for example, यहाँ पे मैंने क्या करा है, यहाँ पे आई हैव सबमिटेड द रिक्वायरमेंट्स जो भी इस इंटरफेस में चाहिए. फॉर एग्जांपल, दे हैव आस्क्ड फॉर द डोमेन, आई हैव सबमिटेड द यूआरएल, राइट? दे हैव आस्क्ड फॉर द कैंपेन आईडी. ये आप स्किप भी कर सकते हो, फिलहाल मैंने अभी डमी डाला था. ठीक है. कैंपेन सोर्स, इस यूआरएल के ऊपर जो भी ट्रैफिक आ रहा है जिस सोर्स के थ्रू, राइट, यू विल मेंशन दोस पर्टिकुलर सोर्स हियर. फॉर एग्जांपल, यू कैन मेंशन द गूगल, यू कैन मेंशन द ईमेल, you can mention एक मिनट, you can mention the Facebook, you can mention the Insta, right? If you are, based on the, based on the interface which you will use, right? And campaign media, for example, I have mentioned this as a, I will use that particular URL over the Facebook, so I have mentioned the meta Facebook, right? Campaign name, again, it is the, generic term you can use. आप अगर इसे, कोई भी नेम भी देना चाहो, आप वो भी दे सकते हो. ठीक है. अब आप एक चीज ऑब्जर्व करेंगे, ये पूरा यूआरएल क्रिएट हो गया है. सबको दिख रहा है? पैरामीटर्स हैज बीन एडेड. Yes, sir. अगर आप चेक कर रहे हैं, सोर्स इज देयर, गूगल आई हैव मेंशन, तो गूगल यहाँ पे था, तो इट इज देयर, राइट? यूटीएम आई हैव मेंशन, दैट इज कॉल्ड, मेटा प्लस फेसबुक, इट वाज देयर, जो कि यहाँ पे ऐड हो गया है. यूटीएम आई हैव मेंशन, सॉरी, कैंपेन नेम आई हैव मेंशन, तो वो भी यहाँ पे आपको विजिबल हो रहा है, राइट? सो दैट इज अ ट्रैकिंग, राइट? अब फॉर एग्जाम्पल, ये यूआरएल अगर मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, जस्ट टेक एग्जाम्पल प्लीज, राइट? If you guys open this particular URL, so anyone can also answer कि इसका डेटा मेरे को कहाँ देखने को मिलेगा? Google Analytics में. Perfect. Because मैंने आपको इनिशियल लेवल पे बोला था कि you should log in with the same ID which you are using in a Google Yes, sir. Analytics, right? So इसका डेटा आपको मिलेगा Google Analytics का. That is the reason. Mark my word. Trust me, जो मैं अब आपको बोलने वाला हूँ, आई थिंक जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, ये चीज़ आपको और ज़्यादा क्लियर होगी. अब आप लोगों ने, बहुत ध्यान समझिएगा. ये डोमेन मैंने आप लोगों को दोनों ओपन कराए थे, एशियन पेंट्स एंड एक ये वाला था. आई थिंक a performance marketer can be able to identify the source of the customer, right? They know that, that particular audience came via organic, or certain audience came via Google ads. अभी क्लियर है सबको ये चीज? yes, no? जी सर. Yes, sir. Okay, Sir, everyone can please. you come again with the Okay, last मैं point? रिपीट कर रहा हूँ. बाकी एक बार जिसको क्लियर, प्लीज एक्नॉलेज करिए चैट पे. से yes, no? Yes, sir. Clear. क्लियर? ओके, प्रीति, पिंकी, पलक, मोनिका, सभी लोग प्लीज एक्नॉलेज करिए. खुशी, विवेक, यस. बाकी लोग कहाँ हैं? जितेंद्र, यस. सब लोग डन. ओके. अब मार्क माय वर्ड, सब लोग प्लीज थोड़ा ध्यान समझिएगा. इफ आई ओपन दिस पर्टिकुलर डोमेन, देन अ पर्सन नोज कि मैं ऑर्गेनिकली आया हूँ, मैंने डोमेन खोला है, मैं डोमेन का ट्रैफिक हूँ, राइट? इफ आई ओपन दिस पर्टिकुलर यूआरएल, अ पर्सन नोज कि मैंने एडवर्टीजमेंट पे क्लिक करा है, राइट? वो डेटा मेरे को कहाँ दिख रहा है? गूगल एनालिटिक्स के अंदर. गूगल एनालिटिक्स में दिखता नहीं है कि ये एसईओ का ट्रैफिक है, ये Yeah. एडवर्टीजमेंट का ट्रैफिक है, राइट? बट अगर मैं ये यूटीएम ट्रैकिंग कर रहा हूँ, तो इससे मेरे को और नीच मिल रहा है कि मैं एडवर्टीजमेंट के अंदर भी कौन से एडवर्टीजमेंट के थ्रू आया हूँ. मार्क माई वर्ड, अगर मैं यहाँ पे इसे, मैंने यहाँ पे गूगल लिखा है, मैं इसे फेसबुक लिख दूँ, तो मेरे एनालिटिक्स के अंदर ये दिखेगा फेसबुक का ट्रैफिक. सो आई थिंक इट इज प्रीटी मच क्लियर कि मैंने वो ट्रैकिंग सेटअप कर दिया है, और मेरे को ये चीज पता लग रहा है. बहुत ध्यान समझिएगा. आई कैन इजीली फाइंड आउट कि वो ट्रैफिक मेरे को गूगल से आ रहा है, दैट पर्टिकुलर ट्रैफिक कम्स फ्रॉम द फेसबुक, दैट पर्टिकुलर ट्रैफिक कम्स फ्रॉम द लिंक्डइन, दैट पर्टिकुलर ट्रैफिक कम्स फ्रॉम द टिकटॉक. आई थिंक क्लियर है सबको? सर एक 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 छोटा सा कंफ्यूजन है सर. Yeah, सर yeah. आपने वहाँ पे जो ये फॉर्म आपने निकाला था,
हाँ जी, यहाँ पे एक जगह था जहाँ पे आपने मेटा एफपी लिखा था, आई थिंक कैंपेन मीडियम पे, यस यस करेक्ट? यस। तो सर आपने बोला कि सिंस मैं इसको एफपी पे फर्दर यूज करना चाहता हूँ, एफपी पे भी मैं इसको पब्लिश करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे मेटा एफपी लिख रहा हूँ। राइट राइट। व्हाट इफ वी विश टू यूज दैट लिंक इन मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स, लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं उसको स्नैपचैट एफपी के साथ स्नैपचैट, फिर वहाँ पे इंस्टाग्राम, इस पे भी उसको अगर मैं करना चाहूँ, तो उसके लिए मतलब कैसे करेंगे हम? ओके, दैट इज अ वहाँ पे परफेक्ट, लाइन बाय लाइन सबको लगाना पड़ेगा? okay, that is a perfect question you have raised, to be very honest. Okay, so just take example. If there is a scenario, we are using a single URL, right? For example, I am using this particular URL on the each and every interface. In that case, we will not highlight those particular factors, right? We will simply mention, right, ads campaign. That's it. We are not differentiating via Facebook. We are not differentiating via the Google. We will use a generic terms. Sorted? ओके सर, थैंक यू। ओके, इफ वी आर नॉट कि Right. कौन से पे है, तो हम एड कैंपेन डाल देते हैं, और इफ वी आर वांट कि उसमें गूगल एड्स या मेटा एड्स मेंशन हो, Right. देन वी कैन ऐड गूगल और मेटा। Right. Mark my word. एट द इनिशियल मैंने आप लोगों को ये चीज पहले भी बोला था, वी आर आइडेंटिफाई द ROI, राइट? हम लोग को रिजल्ट ड्राइव करना है। तो मार्क माई वर्ड, कंपनीज आर ऑलवेज कीन टू नो कि यार मैं फेसबुक से ट्रैफिक कितना लेके आ रहा हूँ, राइट? व्हाट आर द नंबर विच आई मैं लिंक्डइन से कितना लेके आ रहा हूँ। कंपनीज को मेरे से अलग 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 रिजल्ट चाहिए बॉस। कंपनीज को मेरे को एक पूल नहीं चाहिए। आई थिंक सबको ये चीज समझ में आ रही होगी मैं बोल रहा हूँ, राइट? उन्हें हर एक का अलग से ROI चाहिए। जस्ट एक एग्जांपल, चलिए आप लोगों ने अभी कोर्स करा है, मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ। इफ आई एम स्पेंडिंग 1 लाख रुपीज, जस्ट एक एग्जांपल, over the Facebook, right? I spend a 1 lakh rupees over the for Google, and 1 lakh rupees for LinkedIn. Is the company की लाइक की अभिषेक टोटल आपने कितना निकाल के दिया रिजल्ट मेरे को? नहीं ना, राइट? वो मेरे से हर एक का ROI पूछेगा। इट इज नॉट अबाउट मैंने क्यूमुलेटिव पकड़ा के दे दिया कि बॉस मेरा इतना रिजल्ट आपके पास है, राइट? इवन वन थिंग शुड बी, इंडिविजुअली उसको मार्क किया जाएगा कि राइट इसके एफपी का कितना हर है, एक गूगल का कितना है उसका। हाँ, अच्छा। राइट। हर एक प्लेटफॉर्म का अलग। हर एक, इवन इवन ट्रस्ट मी, द कंपनीज आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द अ क्लियर रिपोर्ट, कि आपने उस इंटरफेस के थ्रू कितने क्लिक्स निकाल के दिए, राइट? उस इंटरफेस के थ्रू कितना 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 लीड आया, उसके थ्रू ही कितना कन्वर्जन आया। इवन दो before before activating a certain campaign, there there should be a meeting, right? कि आप लोगों को क्या क्या रिजल्ट चाहिए, राइट? आप लोगों से ये चीज डिस्कस करा जाता है कि आप लोग कस्टमर को कौन कौन से टूल के थ्रू लीड निकाल के दोगे, राइट? वी कैन नॉट डू आ ब्लफ विद अ कस्टमर कि हम लोगों ने SMS मार्केटिंग कर दिया और उसे लीड निकाल के दे दिया, राइट? ये बिल्कुल थॉट प्रोसेस निकाल दीजिए आप लोग, कि हम लोगों ने व्हाट्सएप मार्केटिंग कर दिया और कस्टमर को बोल दिया ये लीड गूगल के थ्रू आया। कस्टमर इज प्रीटी मच क्लियर आज के टाइम में, राइट? आप उसे ब्लफ नहीं कर सकते किसी भी सिनेरियो में। इवन ट्रस्ट मी, पता नहीं आप लोग इस चीज को कितना एक्सेप्ट करोगे। इट वाज अ सिनेरियो इन 2010, टू बी वेरी, और मेरे को अभी भी याद है। देयर वाज अ कस्टमर जिसने मेरे को एक URL के अंदर हिडन कोडिंग लगा के मेरे को URL शेयर कर दिया था। ही सेड अभिषेक यूज दिस URL ओवर द कैंपेन, राइट? एट दैट सिनेरियो वी नोस कि URL के अंदर भी ट्रैकिंग लगता है। इफ आई यूज दैट पर्टिकुलर URL ओवर द SMS, कस्टमर को क्लियर पता लग जाता है कि बॉस जो भी लीड्स अभिषेक ने निकाल के दिया वो सारा SMS के थ्रू निकाल के दिया है। तो कस्टमर आर प्रीटी मच क्लियर। इवन मैंने आपको इस इनिशियल लेवल पे बताया था, आज के टाइम में हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिजिटल मार्केटिंग का डिपार्टमेंट है, राइट? यू कांट ब्लफ, नो सर, वो तो है ही सर। राइट? आप नहीं कर सकते यार, आप ट्रस्ट मी। अगर मैं आपको ये चीज बोल के चल रहा हूँ, मैं अभी आपको सिनेरियोस दिखाने जा रहा हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, एक बहुत क्लियर रिपोर्ट बनता है कि आप लोगों को क्या 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 चीजें निकालनी है, राइट? अगर आपको किसी को भी इस चीज में मार्केट में के हिसाब से डाउट है कि इट इज अ कंफर्ट जॉब, राइट? यू जस्ट सिट ऑन द लैपटॉप, आपको कुछ सेटअप लगाने कैंपेन के बजट कंज्यूम करना है, वो नहीं है। डेसिमल डिजिट के भी अमाउंट को कंपनी पूछ लेती है कि आपने कितना पैसा खर्च किया, राइट? ओके, सो फर्दर, if we say कि again these are the theoretical, okay,
Okay, what is the affiliate marketing? Why we are talking about affiliate marketing in performance marketing session? What is the reason? Sir, because affiliate marketing is also attributed to, matlab, we have to click the link to actually buy a product. Okay. Okay, suppose if we are doing affiliate marketing and I am posting an affiliate link over Pinterest, so the customer will click that product, and then if he buys it, the lead converts into a customer. So due to this conversion process, you can talk about it in performance marketing. It's part of performance marketing. Okay. Okay. Anyone else further? Yeah. What is the benefit? So basic, Why we so do affiliate? basically, in affiliate marketing, we promote someone else's product, Hmm. and and we earn through that Hmm. in affiliate marketing. Okay. Okay. Further, yeah. So yes, when we say affiliate marketing, yes, we try to tap the customers, and we can say, we try to tap those customer, who can be converted. Just take an example. If your friend is looking for the iPhone, right, you send a certain a deep link with your friend, right? He click over it, right, and he got purchased, right, and in that case a certain commission will be delivered to you, right, via the platform which you are using, right. For example, if you are using a Amazon, right, and you send the affiliate link to your friend, right, he bought them, he bought certain that particular model or certain iPhone, right. In that case, the commission will be delivered to you via the Amazon. That is the affiliate process, right. Why we are calculating this affiliate marketing into a performance marketing? Just because of performance marketing is totally based on the result process, right. It is not for the brand awareness. And when we talk about the result, there is a certain monetary benefit which we are getting from the Amazon. That is the reason we are talking about affiliate marketing into a performance marketing. I think it is clear. Sabhi ko clear hai ji? Yes, no? Yes, sir. Right. Okay, so So can you please repeat one more time? Sorry, my connection is not koi clear. issue nahi. For Sorry. example, if I open the Amazon, right, that is called किसी ने करा affiliate marketing का process अभी तक? पता है? सर सीखा है in class but ओके, ठीक है, करा नो, नहीं है. कोई इशू नहीं. सो Amazon आपको एफिलिएट का स्ट्रिप देता है, राइट. देयर इज अ स्ट्रिप, यू कैन गेट इन्फ्लुएंसर और एसोसिएट स्ट्रिप. अगर आप इस वाले लिंक को यूज करके अपने फ्रेंड को शेयर करते हो, राइट, वो उसके थ्रू कोई परचेज करता है, इन दैट केस Amazon आपको सर्टेन कमीशन आपको हैंड ओवर करता है, राइट. दैट इज द रीजन. क्यों? क्योंकि यहाँ पे रिजल्ट है, रिजल्ट इन टर्म्स ऑफ अ मॉनेटरी बेनिफिट. दैट इज द रीजन हम लोग एफिलिएट मार्केटिंग को इसके अंदर डिस्कस करते हैं परफॉर्मेंस मार्केटिंग का. आई थिंक अभी क्लियर है सबको. सही, यस, नो? राइट. Yes. Yes, sir. ट्राई टू यूज इट, Yes. कंपनीज आर यूजिंग इट, काफी सारी कंपनीज हैं जो इस एफिलिएशन के अंदर है. देयर इज अ कंपनी कॉल्ड वी कमीशन, राइट. सबको पता होगा वी कमीशन की कंपनी है जो इस एफिलिएशन वाले प्रोसेस में है, राइट. देयर इज अ कंपनी कॉल्ड जिस पे भी टाटा ने इन्वेस्टमेंट करी थी. क्या नाम था, मेरे को नाम इसके पूरा भी. वी कमीशन पॉलिसी. ठीक है, मैं नेम स्किप कर रहा हूँ. अभी काफ़ी सारी कंपनीज है गुड़गांव की जो इस एफिलिएशन मॉडल पे काम कर रहे हैं. तो ट्राई करिए. अमेजोन के अलावा बाकी बहुत सारी थर्ड पार्टीज कंपनी वेबसाइट्स हैं जो आज के टाइम में दे आर ऑफरिंग एफिलिएशन, राइट. आप चेक कर सकते हैं. ठीक है. ओके, सो अब सीधे डेटा पे हम लोग आते हैं. थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा जो मैं चीज़ें ऐड करने वाला हूँ, ठीक है. Okay, so I think it is clear कि in a performance marketing we use a tool, right? We use a tracking tool. These are the Google Analytics. We use a meta pixel, right? Even we use a UTM parameter जो अभी हम लोगों ने discuss करा था. We use a heat map. What is a heat map? What is a heat map? Anyone? Heat maps? No idea. No Okay. idea, sir. Okay. So just take example. Hmm.
So that is a heat map. Any findings? एक बार थोड़ा ध्यान से ऑब्जर्व करिए. What you feel about ये इमेज जो मैं आपको दिखा रहा हूँ. Why it is why it is yellow, blue, green? Why? Yeah. Yes, answers please. Why why it is showing red, green, yellow? Ashwini, No Babita, idea on this one. So Sir, I think it's showing data values. data Like, values, right? yes, like, uh, sir, because to be very honest, sir, I am seeing this for the first time. I haven't gone through it. No, no worries, no So, worries. so I am just taking an idea. I think it shows data values. Like each color represents higher values, lower values. We were in amongst the class, so sir showed us a few things about colors. I think red one has the highest level of data. Yellow is somewhere in between. Green is a little less Right, than that. Something like that. I right. Agree, agree, don't recall. agree. So Don't recall. agree. So, you guys have seen, this kind of image in the weather forecast, right? Where they showcase, this is a high density area where there should be a rain, or there should Yes, be sir. a limited, there should be a limited rain, right? So, in a same scenario, when we talk about a heat map over the website, it shows the color indication, which definitely, gives us certain values, and values in terms of a clicks, right? Red indicates those areas where there is a high number of clicks, right? Proportionately, when we comes out on a outer range, that particular clicks count reduce, right? Red is a high density area, and based on that, there should be a yellow, then green. So there should be kind of nominal clicks, right? So these areas are high clickable areas. That is the reason these are visible in a red color. I think it is clear. Yeah. Yes, sir. Right. So there's a company who is providing this kind of a services called Crazy Egg. You can jot down that particular name. That is a Crazy Egg. This company is providing a heat map services, and they are offering a certain packages, right? So yes, they shows that particular data. Heat map. Crazyegg.com. Sir, I have a small question. Yep. You just said that this Desi Map, the name of the company. Okay, Crazy. Crazy Crazy Egg. Egg. Crazy Egg. Okay. So my question is that, like, if there is a company that's providing heat map services, how does it make profit? Like, Okay, so they are offering our packages, right? For example, for the 1 year, we have spent more than one CR for this to this organization, right? okay, So they are offering a services. They provide us certain code. We implement that particular code on our website, right? They develop the report. They provide a dashboard where we can clearly visible. Where we can clearly see the level of heats over the website. So that is the service they are offering. So uh, they are making a money based on their packages. sir, but the thing is that anyone can do this by themselves. Like, if, No, no, no. Not everyone can do, because they have created a code, right? If a certain okay, company can create a code, then definitely they can provide a service to other company, and they can offer the heat map service. They have created a code. They have clicked that particular service. That is the reason. okay, so if I, for example, if I like I have my own website, so if I want to like check the heat map of that, is there a certain platform or certain place from where I can check, or do I need to contact a company today? No, so they are the n number of companies who are providing packages. Even Mhm. Crazy Egg providing a 7 days trial package. But although it is a trial package, they require your debit card detail. Okay. Once you reach to a eighth day, then definitely Mhm. based on that the amount will be deducted, right? So you can Okay. try the trial version, right? If you feel that particular package or that particular company or that particular dashboard is good, in that scenario you can avail that particular service. Okay. Okay, sir. So I have a Yes, question. please. Sir, I really didn't understand the point that how is it helping us in tracking? Okay, okay, no worries. So Can you please, can you please explain it in a easier way?
Yo, or now what maybe you with an example of some sure, website. sure, sure, sure. So And you also, how do we track this? I mean, how do we get the data out of it? I wanted okay, to know that. perfect, perfect. So just take example. Okay, so I think everyone knows that is a theory called F over the website. F theory सबको पता है? What is the F theory? Okay, just take example. No idea, sir. No, no We way. haven't taught this. थोड़ा सा ध्यान से समझिए प्लीज ठीक देखिए एफ पैटर्न होता है बेसिकली अगर आप देखेंगे तो अगर आप किसी भी सर्टेन वेबसाइट पर अगर आप जाते हो तो आप क्लिक जो करते हो वो लेफ्ट सिनेरियोज में ज्यादा करते हैं इस तरीके से क्लिक ज्यादा होते हैं हर एक वेबसाइट के ऊपर अगर आप चेक करेंगे तो सो दैट इज एफ थ्योरी राइट इसमें क्या है दैट शोज कि जो यूजर्स की यू नो activities in on a certain website, right? They click in a F pattern. Either it can be F or it can be E, depending upon the website or depending upon the product or services they are offering, right? अब मेरा point क्या है ध्यान समझिएगा why the companies are showcasing these banner on a top in a simple answer Aishi why the companies are showcasing these banner on a top Because this is the hero banner, they want people to see this first. right and how they knows कि कि ये area ज़्यादा अच्छे हैं सो ये Hmm. एरिया राइट सो ये एरियाज ही हमें वैसे पता लगते हैं कि हम लोग इन मैप्स को यूज करते हैं लेट मी क्लियर यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं दीज आर द पॉइंटर जहाँ पे लोगों ने क्लिक करा है आई थिंक विजिबल हो गया सबको दीज आर द टैब्स दीज Yes, आर द sir. बटन Yes, sir. राइट अब ये हमें पता है अब हमें अगर ये पता लग गया कि दीज आर द एरियाज जहाँ पे लोग ज्यादा क्लिक कर रहे हैं इन दैट सिनेरियो वी विल प्लेस आवर बैनर ऑन दैट एरियाज अभी क्लियर है जहाँ पे क्लिक ज्यादा होंगे फॉर एग्जाम्पल Yes, sir. राइट जहाँ पे मेरी क्लिक ज्यादा है तो डेफिनेटली अगर मेरा कोई ऑफर लॉन्च हो रहा है मैं उसके बैनर वहां लगाऊंगा राइट आई विल प्लेस दोज बैनर ऑन दोज लोकेशन जहाँ पे क्लिक्स के काउंट ज्यादा है सो इसका बेनिफिट मेरे को ये मिलता है अगर मेरे को अपनी साइट का हीट मैप पता है देन डेफिनेटली हम लोग को साइट का इंटरफेस बनाना दैट इज वी कॉल इट एज अ यूआई यूएक्स राइट वो इजी हो जाता है हमारे लिए व्हाट इज यूएक्स User So interface, user user interface. Interface. right Right. So if we are able to identify, what is the our good user interface, right? Basis of that, we will be able to place the banner on a right position so that that particular banner can get a good clicks, right? For example, if we are offering a certain offer and we place the offer at the top of the bottom, right, on a right position, then definitely there are the chances that customer will not click, right? If we showcase the offer on a top position, as we have already seen on a Asian page, there are the chances that there will be a conversion. Abhi clear hai? Yes, no? Yes, sir. Right? Okay, Ayushi, clear abhi? so Yes, sir. Right? अब ये अभी डेटा कहाँ आता है? If particularly if we are doing this for some company or maybe some website, so this is the only thing that we have to give, right? The map that is No, presented, no, कि कहाँ yes, पे yes, सबसे yes. ज़्यादा clicks हैं and all. That wherever it is mentioned, that is the whole result of it, right? I Right, mean, right. there is no other tracking about it. Right. Even when we create to be very honest, in an organization, F theory and E theory will be followed. Right. Basis of that, the landing page is being created. Right. It is not about a certain person got the thought process that we just create a landing page and without implementing any thought they just create. It is not like that. Right. Companies are following a theory. Companies are following a certain pattern. Basis of ये सब चीजें बनती है. Even there is a simple question why lead form is always on a right position. Can anyone can answer? लेफ्ट पोजीशन पे क्यों नहीं होता राइट पोजीशन पे क्यों लीड फॉर्म डालते हैं कभी आपने ऑब्जर्व करी ये चीज हमेशा लैंडिंग like क्यों क्योंकि हमारा या यस विवेक बताइए तो हमारा कार्ड का ऑप्शन भी वहीं पे होता है, परचेजिंग का ऑप्शन भी वहीं पे होता है. राइट और हर एक आप ये चीज देखिए ये जो चीजें आप लोग देख रहे हो ना ये ऐसा नहीं हुआ कि किसी को सपना आया उसने वो चीज इंप्लीमेंट कर दिया इट इज नॉट ओवर द नाइट थॉट ऐसा कुछ नहीं है राइट हर चीज डिफाइंड होती है लीड फॉर्म राइट पैटर्न में जस्ट बिकॉज इसलिए डाला जाता है क्योंकि सबको पता है कि राइट साइड पे हम लोग माउस अपना माउस यूज करते हैं और लोग जल्दी क्लिक करते हैं राइट साइड पे कंपैरेटिव ऑफ लेफ्ट साइड में तो दैट इज द रीजन हर फॉर्म भी जो खुलेगा या वो सेंट्रली अलाइंड खुलता है या फिर राइट अलाइन खुलता है
तो ये सब चीजें देखी जाती है, दीज ऑल आर द पार्ट ऑफ परफॉर्मेंस मार्केटिंग, राइट। ये सब चीज देखा जाता है, तभी चीजें बेसिस ऑफ दैट परफॉर्मेंस जनरेट होता है हम लोगों का, राइट, क्लियर। So this Okay, so tracking is only for the websites, right? Not on any other social media No, 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 no. medium. Heat map for the website. Heat map is a tool Only for website, on the right? website. Yes, yes. Because Okay. when we talk about Meta, they provide the metrics. Basis of that, we can view कि हमारा campaign कैसा जा रहा है. But yes, in a heat map, they showcase a graph, they showcase a pattern कि how the customer are following the pattern. कैसे कैसे वो उसे कर रहे हैं, right? Okay, just have a quick data review कि market में data कैसे आता है. That is called MOM. What is the MOM? That is called minutes of meeting, right? So can you go back to the previous slide, please? Which one? The one with the tracking tools. Okay. I think it was some other slide. I think it was point number 9. 9? No, no. No. ठीक है. Maybe you can search heat. Okay, that is one. That is one. Heat map. Yes. Okay. Okay. I'm It is good. again a Hotjar is a tool, like we have mentioned. Heat map. Hotjar is again a second tool in that case. sir, Yes. Hotjar comes free or is it premium No, tools? no, obviously there are no free lunches in the world, so that is a paid. No, I'm just asking because there are certain marketing tools that offers premium services. Like I, once or twice you can use it. So that I is why. agree. I agree. Only Google products are maybe free for ourselves, No, but other than the all the yeah, I agree. There are the certain tools who are offering a free services. But Mhm. trust me, in terms of a data quality, there is a variation in terms of a paid or in terms of a free, Okay. right? Okay. So Preeti, so if you can mute, okay. it will So be easier. just a second. Preeti, can you mute? Okay. So yes, when we talk about data, why we always discuss these parameters before the before executing any campaign. These are the minutes of meeting. So have a look on it. What is being discussed here. What is the reach? What is the lead deliverable? What is the lead number? And what is the expected quality of lead? Please एक बार go through करिए. और एक बार प्लीज म्यूट रखिएगा. कोई क्वेरी होगा तभी आप लोग प्लीज एक बार म्यूट करिए प्लीज. ठीक है. यस. So these are the minutes of meeting. Once any client comes on board, then definitely we always discuss the parameter. What are the expectation with the which the client is looking forward? What are the numbers in terms of a leads? What are the numbers in terms of a clicks? What are the numbers in terms of impression? These all should be discussed before executing any campaign. So, sir, like these are the core objectives that Right. we jot down before we start Right, working on any right, campaign, right, right? right, Okay. right. To be very All right. honest, but just a second. To be very honest, once a certain client comes on board, each and every aspect should be discussed. It can be it can be of a audience, number of audience which we are targeting, in terms of a leads, in terms of a quality of lead, in terms of a the bifurcation should also be there. For example, this company is offering a home interior, this company is offering a paint services. Then bifurcation should be there. Total number of leads required 3,500, right? And in terms of a paint, it should be 1,000 lead.
So each and every aspect should be discussed. It should not be कि हम लोगों ने पैकेज ले लिया और देन हम लोग भूल गए अपने ऑब्जेक्टिव. ऐसा नहीं होता. हर चीज जो प्री डिफाइंड है उसके अकॉर्डिंगली हम लोग को प्रोसेस सेट करना पड़ता है. Right, these are the main target, these are the main objective which we have to fulfill, right, and these are our daily activities which we do, right, even though you know अगर आप इन scenarios के देंगे, what is this, anyone, these are the package Sir, cost, these are the, can you yeah, can you go back to the previous yes, screen? yes, Are you done explaining this one? yes, I'm done. Okay. So when we say reach, it is saying 5.5 to 6 crore impressions, and unique ones out of that is 2.2 to 2.5. Right, So एक ही बंदे ने कई बार आपका एडवर्टाइजमेंट देखा है, राइट? right, दैट्स व्हाई वी आर कैलकुलेटिंग द टोटल एंड उसमें से यूनिक हम निकाल right, रहे हैं. right, right, right. Even you knows कि हम लोग कैपिंग सेट करते हैं, बजट कैपिंग लगता है, क्लिक कैपिंग भी लगता है कि हम लोग को दिन में कितनी एडवर्टीजमेंट दिखाना है, कितने यूनिक कस्टमर को दिखाना है, तो वो सारा कैपिंग दिखे. टू बी वेरी ऑनेस्ट, इफ दीज थिंग्स आर डिस्कस्ड इन अ मीटिंग, देन बेसिस ऑफ दैट हम लोग ये सारी कैपिंग सारे पैरामीटर्स पे इम्प्लीमेंट करते हैं. राइट, राइट, ऐसा नहीं है कि हम लोग सर एंड दिस और इस या यस यस प्लीज. सर सर और यहाँ पे ये मेंशन नहीं रहेगा कि मतलब टाइम कितना होना चाहिए, किस टाइम के अंदर आपको ये लीड्स जनरेट करने पड़ेंगे, लाइक नहीं नहीं, ये पर होता है, डे, ये सब होता है. विद इन अ वीक और मंथ. नहीं नहीं, ये सब मेंशन होता है, लिखा हुआ भी है, क्वार्टरली हम लोग को इसे डिलीवर करना है. अच्छा अच्छा अच्छा. क्वार्टरली. ओके. Even अगर आप सेकंड स्लाइड देखोगे, these are the, again the target, we have to achieve. So these are the mattresses campaign, they are the kitchen interior, they are the normal home decor companies के campaigns है जो आप देख रहे हो. What is CPL? What is CPL? Full form of CPL? For नहीं, cost impression. cost per lead. Cost per lead. Okay, so that is the cost per CPM. lead, right? That is the cost per lead. Lead can be lead can be in terms of rupees, can be 200 rupees, it can be of 800, it can be at 1215, it can be of 2000, right, depends कि हम लोग कौन सी ऑडियंस को लेके चल रहे हैं, राइट, ये सारी चीज डिस्कस होती हैं. एंड इवन आप चेक कर सकते हो क्लिक वर्सेस वेबसाइट विजिट, दैट इज द डेटा. ये भी मॉनिटर करा जाता है कि आप लोग कितने क्लिक्स के अकॉर्डिंगली हम लोग को कितना लीड दे रहे हैं. तो ये सब कुछ डिस्कस होता है, राइट. So these are the packages. In a platinum you can get 1200 lead. In a gold package you can get 700 to 270 70, right. In terms of silver packages, for the mattress company we are offering triple free, right. So these are the count which we are offering, right. so At the how this package price is decided? Is it the digital marketer who is giving these packages? very कि nice, अगर very आप nice. मुझे इतने इतने दोगे तो मैं इतना लीड्स दूंगा. Yes. So these are these are the parameter which we create based on our past experiences, past campaign. For example, अगर मैंने if I run a campaign for a certain client in a previous duration and मेरा ये assumption था कि उसमें जो लीड पर कॉस्ट पर लीड है वो मेरा 300 रुपए है, तो मैं अभी भी उसे सिनेरियो बोल के चलूंगा कि कॉस्ट पर लीड मेरा 300 के आसपास ही जाएगा. So these are the practices, these are the these are the experiences which we got from the previous campaigns, right. And in this package of 3 lakh, So it's totally depend on advertisement, the Yeah, please complete in a package of. Monica. Yes. yeah, I'm saying in a package of 3 lakh, whatever is the advertisement cost, that is covered by digital marketer only then, or that is outside of this package? So to be very honest, the package cost has been shared with us, right? Ki, for example, if there's a company who is into RO industry, right? Who bought a pocket package of 3 lakhs. In that case, the parameters has been defined that cost per lead should be 250, lead delivery should be 1200 per month, based on, right, lead contact ratio. What is the contact ratio? Based on the lead received and the person who is contact, the person from with whom we have contacted, right, that is the ratio, right. So these are the parameter which has been discussed even with the client or even within a team. What is I have a MS question. visits here? Yeah, so one by one, yeah, please, I'm please. saying what is MS visits here? So that is the microsite. What is the website visit? Okay. So each And and every contact ratio out of let's say 1200 leads, we contacted 6% of them. 6% should be contactable. Okay.
It should not be, I'm not interested, you have put a wrong lead. It should not be, those numbers should be contactable, right? Okay, one more thing, so Sir, I have a question. yes, yes, go ahead. If supposingly we are working for some company, we Hmm. are doing the marketing, and we have to make certain for that matter strategy Hmm. that this much amount will be given to us, and then we will be giving all these results. Hmm. So that research or maybe that strategy, nowadays everyone is using Chat GPT and everything. Right. So how is that helpful, or how is that, I mean, it's kind of a shortcut for us. We don't have to do any research. We just have to go there and ask them for a strategy or maybe multiple strategies, and they give us something. So are the companies accepting that, or they know that these type of strategies are given from ChatGPT and it is not someone's effort? No, I we. wanted to know that because digital marketing is increasing Hmm. in every aspect and in Right. every different ways. Right. Every day they are coming with different perspectives or Hmm. something like that, but AI is definitely a part of it now. Right. Right. We can't get away with it, and for me it's a shortcut. You don't have to do anything. You just have to go and just speak to ChatGPT and they will give you We the just know results. the yes, we just know Sir, the proper prompt for that. sir, Yeah, I so would like to how is make that? a point here. That is, as Ayushi was saying that we can do everything from ChatGPT. We don't need to do manually. Personally, since I am into content development, Okay. I have used ChatGPT for this kind of purposes quite a lot. Hmm. And I can tell you with certainty, ChatGPT is not 100% correct. Right. There is a Right. lot of ambiguity in it, and Right. whenever we are like, even if you are bringing out reports, if we are, for example, if we are doing an email marketing campaign and Right. we are bringing out, we are trying to bring out a lead for that, Hmm. there is a lot of fake information in there. Right. Like there are, I have seen myself that there are certain email addresses that actually do not work or have expired, website links that are not opening at all. So we cannot completely rely on ChatGPT. Right. Yes, ChatGPT is helpful to I would even say that to a very long extent, ChatGPT is very helpful in this place. But you cannot say कि 100% ChatGPT में जो भी डालेंगे वो निकल के आ जाएगा Right. ऐसा नहीं Right. है sir. Right. Trust me, to be very honest, we can get the ideas, we can get the thought process. I agree over that, right? But when we talk about, implementation, right? Implementation should be ours, right? Our thought process should be there, we are the only person who can, who can easily judge the mentality of a customer, right? Chat GPT never knows, right? So that is the reason I always say take the ideas. I'm not saying don't use the Chat GPT because companies are growing. So I in fact in Meta ads and Google ads also, now that we select Right, the audience, right. so they have given this option of AI. But Clearly it is mentioned that you can compare your ads, or you can agree, run agree. it that way, that one is AI driven and one is your own personal, and you Right, can right. see the results. So basically what I feel is that AI is now challenging literally the Agree. But Ayushi, people in who are that working, I right? agree, Ayushi, but when we say these tools are providing the AI services, right? But in that case, we can easily say that we are just providing the helping hand to a tool that they do whatever they want to do, right? They they pick the audience accordingly, they pick the budget accordingly. But when we involve in that particular process, when we do the campaign from our end, when we do the when we pick the audience from our end, we pick the keyword from our end, then definitely in that case we can see that we get the good result as comparatively of I AI. understood that. My point is that in this industry where you are there, or maybe big companies are working, Right. how is it helpful? I am asking that. So to be very I honest, know that we have to work on our own, and our right, results are going to right. be different, and So AI is doing everything on its own, and we don't even know the metrics behind it, agree, agree. right? We don't get the results exact what they are So doing. in that case, I'm Ayushi, asking that hmm, how is it making a difference? so Ayushi, in that case, we can get a help. We can get the thought process. We can get the ideas. Just take example. If we want to run the campaign, right, and if we are looking forward for the good creative, in that case, we can help. We can get the help from the Chat GPT. We can get the ideas that Chat GPT. I just required a good creative for the Asian paints. They will create. Then based on that, based on the creative which we have received from the Chat GPT, we can showcase that particular advertisement to our designer. That we required
our expectation is this. So yes, we can get the thought process. That is very helpful in that case. I hope सब लोगों ने एक अभी recent trend सब लोगों ने follow करा होगा, that is called ghibli, right? ghibli देखा था सबने? सर देखा है सर, बट Yes. आई Yes, sir. डिड नॉट Yes. यूज सब इट. सब लोगों ने वो देखा है ट्रेंड सर. सब लोगों ने वो ट्रेंड फॉलो करा था. एवरीवन इज Yes, ऑन, sir. Yes. राइट? Yes. Yes, Yes, sir. sir. Everyone is on Yes, chat sir. gpt, everyone was on chat gpt, they are just creating the images, right? But trust me, it is a trend, right? We got the idea, and if we are not able to grab those ideas, then we are fooled. To trust me, अगर हम लोगों ने इमीडिएटली चैट जीपीटी से वो इमेज लेके यूज नहीं करा होता, हम लोग बैठ के डिजाइनर से बनवाएंगे, दैट इज टाइम टेकिंग. यूज करिए टूल्स को, राइट? एआई इज meant for us, right? हम लोगों की हेल्प के लिए ही है. AI is that fast that the ideas that they are Right, giving, like this Ghibli idea, this worked only for I think 2 weeks. right, 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 That's it. right. Then it became very old, and whosoever was late in that, they were like, you are very late. You are very late, obviously. So try, yes. I'm not denying that we don't accept the AI, but yes, we take the help. Definitely, we just take the help, because obviously, to for that particular, for the certain ideas, it will take 2 or 3 weeks, but Chat GPT will create those particular idea in a second. So we should take help, but yes, at the end, go with your experience, go with your knowledge. That is more important, right? Okay, so one more thing I just want to add, and we are almost done in that case. What is this? Yeah, what is this? That is called duration. That is called 30 Sir, can days. you please unselect? So ये Okay, थोड़ा color change कर कोई देती. नहीं, कोई नहीं. Yeah, yep. वो सर वैसे ही प्रिंट हुआ है. हाँ, वो selected है. That is the image. That is the image. That is the reason to हाँ, accept it. हाँ. Yeah, I noticed that. So, Yeah. that is the cost of the campaign which we have run. The company called Bonito, जो आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा, right? That is the landing page जो मैं अभी आपके साथ share कर दूंगा. What is the MOM? MOM was cost was 2 lakh rupees. Campaign duration was 30 days. That is called 1 month, right? Impression should be 8 lakhs. CTR, what is CTR? Full form of CTR? Click-through Click rate. through rates. And Click through how it. we calculate it? What is the CTR formula? CTR formula क्या हाँ. है? Number of clicks upon number of impressions into 100. Yes, sir. ठीक है, Yes, ठीक. sir. Clicks upon impressions, sir. Click Into 100. upon into 200, right? Okay. Estimated lead, that is called 160 to 200. Or what is the CPL? 1000 to Cost per lead. 1200, क्लिक्स पर लीड. Sir, leads. right? Cost per lead is मेरा कितना पड़ रहा है? 1000 से 1200. So mark my word, these. Okay, so I'm just sharing this landing page with you all, guys. That is the landing page. So again, okay, just go through it. I have a small question with all of you guys. Please ध्यान से देखिए क्या है वो, मैं अभी पूछूंगा आपसे. पेज को ध्यान से go through कर लीजिए. So it is again a landing page, right? So it is a single page, right? It is a single page. It have a lead form, name, mobile number, and in a drop down we have placed a city that is called Bangalore, right? So I think it is clear that particular campaign But is. there is no tracking on the uh, like the form which we There is are no tracker. mentioning Yes. previously, na? नहीं So there is ये no tracker on the form. नो, ये जो अभी आप देख रहे हो, मैंने आपको डायरेक्ट लिंक दिया है, वो मैंने गूगल से निकाल के दिया था. तो अगर आप कोई लिंक गूगल से निकालोगे, इन दैट केस यू विल सी द ट्रैकिंग. अगर कोई यूआरएल मैं आपको दे रहा हूँ, तो इट इज इसमें नहीं मिलेगा आपको ऐसे. अच्छा. Okay, so इसमें तो सर इससे हमारी जो लीड्स हैं वो नहीं खराब होंगी ओके, कोई नहीं, बिकॉज यहाँ से भी जनरेट. कोई नहीं, मैं आंसर कर रहा हूँ उसका. फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर बोनीटो सर्च कर रहा हूँ, तो इट इज अ वेबसाइट डोमेन, राइट? और अगर इसका कोई कैंपेन चल रहा होता है, तो डेफिनेटली वी कैन सी द लैंडिंग पेज एज वेल इन दैट केस, राइट? अब रही बात की उस पर ट्रैकिंग लगा हुआ है, नहीं, डेफिनेटली जब ये कैंपेन चला है उस पर ट्रैकिंग कोड सेटअप हुआ है. बट एज अ इंडिविजुअल मैंने आपको एक लिंक चैट पे शेयर करा, मैंने गूगल से नहीं निकाला. अगर गूगल से निकाला होता, कैंपेन इसका चल रहा होता, इन दैट केस यू कैन इजीली सी द ट्रैकिंग. इन दिस सिनेरियो मैंने आपको सिर्फ यूआरएल शेयर करा.
ट्रैकिंग रिमूव करके। अगर आप ये भी देखोगे तो मैं इसका भी आपको ट्रैकिंग रिमूव करके यूआरएल शेयर कर सकता हूँ। आई थिंक अभी क्लियर है जो मैं बोल रहा हूँ? Yes, sir. Yes, sir. राइट, मैं अगर ऐसे देता आपको तब ये मिलता, अगर मैं यही गूगल पे निकाल के दे रहा हूँ तो इन दैट केस यू कैन इजीली सी द दोस ट्रैकिंग पैरामीटर इन दैट केस। ठीक है, क्योंकि दोज विल बी एक्टिवेटेड ओनली ऑन सर्च पेज, सॉरी एसआरपी, ओनली ऑन गूगल, राइट? ऐसे नहीं दिखता वो। ओके, सो अगेन इन अ लीड फॉर्म देयर इज सर अ, या सर आपने ये मतलब सिंस मैजिक पिक्स के थ्रू शायद ये डिजाइन किया गया, इसीलिए इसका कोई ट्रैकर वगैरह अभी तक वहाँ पे लिंक पे शो नहीं कर रही, प्राइवेट यूआरएल। राइट राइट, प्राइवेट यूआरएल, क्योंकि अभी उसका कैंपेन बंद है रिसेंटली। अच्छा। Or again, if you can see, in a lead form, there is a parameter called, city, and there is a Bangalore. So that means this particular campaign or this particular company has opted a services. That means that campaign should run only on Bangalore. I think it is clear. अगर यहाँ पे cities और होता तो मैं उसको यस बीच सर। में bifurcate करता, but yes, Yes, sir. that particular landing page or that particular campaign is totally, for the Bangalore city or for the Bangalore customer. That is the reason there is a clarity in a lead form as well, that we are just looking forward for the customer who are into a Bangalore city. If they are not, then obviously we are not looking forward for the customer who are from Delhi, from Noida, or from Pune. So I think via this we are able to, we are able to reduce our cost per click, sorry, cost per lead. Because agar, if a customer who is living in a Noida city and we got the lead, right, then obviously our budget will be consumed. But in that case we are not able to, we force the customer. If you are from the Bangalore, we are accepting your lead. If you are not, we are not accepting your lead. I think it is pretty much clear with all of you, right? Yes, sir. Yes, sir. राइट, हम लोगों ने वहां पे ही रोक दिया. सो अगेन इट इज अ स्ट्रैटेजी, राइट? वी आर एबल टू कन्वर्ट द कस्टमर, along with we are able to reduce our cost per lead, and even we are looking forward for the leads who are into a Bangalore city, not from the other cities, right? So we are focused, right? It is not about कि कोई भी आया लीड सबमिट करके चला गया. हम लोगों का वो मॉडस ऑपरेंडी नहीं है. क्लियर है सबको ये चीज? यस. स्पेसिफिक टू बैंगलोर। Yes, that we are highly stick to for the Bangalore. Even there are n number of pages. Just a second. So that is a company called Tata Pravesh. They are into a window and door making industry. So inquiry now again on the right side. Yes. So यहाँ पे सर क्या लैंडिंग पेज को वेबसाइट के साथ लिंक करके रखा है क्या सर? ये पूरा वेबसाइट ही डाला हुआ है. मैंने अभी ऑर्गेनिक ओपन करा था, एडवर्टीजमेंट नहीं था ये. अच्छा अच्छा So अच्छा just take अच्छा। example, sleepy head. Again, no advertisement. Sleepy cat. Sleepy cat was again, was my client. Sleepy cat. Okay, so they are the companies who are just focusing on their user interface, or they are they are looking forward for the good quality of lead. Okay, just take example. एक बार प्लीज म्यूट करिएगा, प्लीज एक बार प्लीज म्यूट करिए. ओके, सो जस्ट टेक एग्जांपल. एक बार प्लीज इस वाले डोमेन को ओपन करिए आप लोग जल्दी से, फिर वी आर डन. इस वाले यूआरएल को ओपन करिए. दैट इज अ गुड एग्जांपल, ट्रस्ट मी, दैट इज अ वेरी नाइस एग्जांपल. स्लीपी कैट. ओपन प्लीज. यस सर। Done. यस। Everyone, please acknowledge. Open. Yes, Yes, sir. sir. Yes. Okay, that is a great example. Trust me. Okay, so जब मैं इसे ओपन कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए प्लीज. अब आप लोग इसे क्रॉस करने की कोशिश करिए एक बार
इसके ब्राउजर को जो आपने खोला इसे क्रॉस करिए, या कुछ टाइम के बाद जब आप माउस लेके जाएंगे क्रॉस पे तब देखिए क्या होगा। मेरे पे आ चुका है वो, दैट इज द रीजन मेरे पे दोबारा नहीं दिखेगा। एक फॉर्म खुलेगा आपके पास, दिखेगा आपको। डिस्काउंट कोड टाइप से। राइट राइट राइट। और वो इमीडिएटली आ रहा है आपके पास, राइट, इमीडिएटली नहीं, इट कम्स व्हेन यू नो जब आपने कर्सर मूव ऑन कर रहे हैं सम थोड़ा सा, सेकंड। राइट, तभी वो दिख रहा है आपको, राइट। सो दैट इज अगेन अ स्ट्रेटजी, यू नो, why we have implemented that particular lead form, so that if the customer try to intent. Sir, I couldn't see the difference. Which Okay, difference are you talking about? okay, just again, for example, मैंने अगर डोमेन खोला है and if I try to close that particular browser, or I spend a certain time, right, a pop-up comes, right, I think Yeah, visible होगा, that came. right. So why, so again that is a strategy, right. We are just focusing कि customer अगर मेरे पेज पे रुका है, he just fill the form, right. We try to take a lead, right. And even though we are trying to focus them, if the customer is looking forward to exit that particular page, in that case we try to retain them. We are just showcasing a discount, that we are offering a discount so that he can spend more time over the website, right. I think it is clear, this point is clear, Yes, sir. right. Okay, so these are the parameters. Trust me, there are the n number of strategies, n number of patterns we follow, right? So yes, that is all about from my end. If you have any query, you can raise. So we are done with that. And even So I have one question. yeah, yes. First, can you send this presentation? And second, how are you getting your clients? So again, we run the campaign. Trust me, we run the campaign on Google. We create the content over the Facebook, over the LinkedIn, over the over the any each and every interface, even on the Snapchat, right? We on daily basis we generate the content. We have a team for the content writers. We have a team for the video editors. They do a video. We create a shorts, right? We create blogs as well. So that is all about. So it's like you promote yourself through campaigns, you run ads, Right, so that right, people do see your portfolio. right. Okay. Even if I have discussed about that particular company called Falankuna. So just wait, just wait. So I have a question. Yes. So these Since are we the, have okay. completed the course, Hmm, almost getting completed, hmm, and now we are learning the practical things. So now that we know every area of digital marketing, so once when we look for a, maybe a job or something, people say that what is your, where are you landing best? What is the thing that you can do best? But right. right now we have just learned this whole thing, and we are not even pro in any thing. So when you started this digital marketing, learning it, or maybe performance marketing, whatever, Hmm. how did you decide what is your niche, or what are you good at? Okay, trust me. I Yes, sir. The same question, sir. Okay, Actually, okay, no worries. So trust me, during the course, I think everyone knows their expertise, right? Might be someone is good in a WordPress, might be someone is good over the No, sir, we email don't marketing, know. We don't know right now. I mean, we anything. have done everything. yes, sir. Every We part can't is done. calculate We We have actually. have Yes, sir. uh, No, agree, We agree. can't calculate, sir. I agree, but For me, if you ask why I joined this course, is because I have my own business, okay. and my business is of jewelry and of handbags. Hmm. So I was struggling a lot with the marketing part. So then I decided to do it on my own, and now Okay. I'm never then more confused No, trust that me, what is going to help me, I agree, I agree. because Trust. I I can't be a totally master agree of with you, everything, Ayushi. right? I Hmm. can't Yes, sir. run the whole Totally. business on my Agree. own, and I can't do Yes, the sir. marketing on my own, and I can't even do the landing page and this and that everything. I can't do Yes, everything on sir. my own, right? That's So yes, sir. for That's a the main But trust me, but ये point. तो trust हमने me. सर बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज की बात करी सब कुछ किया बट if it's for a very small business or a very small startup, what is it that is going to help? Trust me, try to do each and every activity from your end, right, until unless you are not able to identify what are the loopholes in a certain aspect, और अगर आपको ये नहीं पता होगा कि मेरे को ये चीज ज्यादा अच्छा आता है या ये चीज अच्छा नहीं आता, कंपैरिजन खुद ही आने लगेगा। लेकिन यस, मेक श्योर कि आप लोग पहले सारी चीजें खुद से करें। क्रिएट योर ओन लैंडिंग पेज, क्रिएट योर प्रोफाइल, क्रिएट योर पेज ओवर द फेसबुक,
खुद से सारा कुछ बनाएं ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम, आपको सारी चीजें खुद से जजमेंट आना लगेगा कि यार ये चीज मुझसे नहीं होता, इसके लिए मेरे को हेल्प चाहिए होगा किसी का। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ट्रस्ट मी, आपको एक चीज खुद ही क्लिक कर जाएगा कि आई एम गुड इन दिस, राइट। जिसमें आप ज्यादा टाइम देना शुरू कर दोगे दैट इज गुड, राइट। फिर आपको आइडिया लगेगा कि यार ये मेरे लिए सही है, तब मैं इस पे काम करता हूँ, तब मैं इस पे इस चीज पे आगे चलता हूँ। बट यस, एक एज अ स्टार्टअप ट्रस्ट मी, आप लोग अगर ज्यादा अमाउंट खुद से स्पेंड नहीं कर सकते शुरू में, राइट। आपको सारी चीज खुद से करनी पड़ेगी। तो जो जो चीजें आपने अभी तक सीखी है, ट्राई टू डू विद योर सेल्फ, राइट। हर चीज को इम्प्लीमेंट करिए, करते चलिए, टाइम देना पड़ेगा, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ही चीजें आती हैं। और रही बात स्किल सेट नहीं आता, वो अभी वो क्वेश्चनेबल अभी इसीलिए है क्योंकि अभी आप लोगों ने माइट भी ज्यादा टाइम नहीं दिया होगा। टाइम ज्यादा दीजिए, क्योंकि देखिए ट्रस्ट में हम लोग हम लोगों का ब्रेड एंड बटर है, राइट। हम लोगों को यही करना है, right, that is the reason हम लोग we are able to identify, that is our our buzz point, right? But yes. Yeah, I feel it is actually like a loop. So why I started my own business, okay, and why I landed up doing this course is because I had lack of funds. Hmm. Right, I couldn't spend that much of an amount to hire an agency for me. Agree. Now that I have learned everything, Right. what I have understood is for digital marketing, you need funds. Obviously. So, Right. yet again, I am at the same point right now that if I have to run a better business or maybe do everything on my own, then also I have to spend. And one more thing that I want to add कि अब अभी अगर if we are hiring some agency then we know कि वो काम कर लेंगे, but if we are working by ourselves और हम उसमें funding use कर रहे हैं then we have a doubt कि हम उसको waste ना कर दें. एग्री, That is the main thing. एग्री। देखिए जब अभी आप लोगों ने ट्रस्ट मी, जो मेरे को अभी से समझ में आ रहा है, आपने अभी इसलिए करा कि जस्ट बिकॉज आप लोगों को अभी एजेंसी से हेल्प नहीं लेना, राइट। अगर आपका पर्पज ही यही था तो आपको खुद से एफर्ट डालना पड़ेगा, राइट। ट्राई The टू डू इट। agency से help ना लेने का decision ही तो lack of एग्री, finances वो है ना. इसीलिए है क्योंकि आप लोगों को फंड्स का है। और मैंने स्टार्टिंग में ये चीज बोला Yes, था, एज अ स्टार्टअप अभी हर एक बंदे के पास फंड्स नहीं होते हैं। इनिशियल लेवल पे exactly. आप लोगों को अपने एफर्ट तो डालने जो भी पड़ेंगे। फंड्स है वो तो हम बिजनेस पे लगाएंगे ना. अगर हम ऑब्वियसली, मार्केटिंग में लगा देंगे तो फिर बिजनेस पे स्टॉक मेंटेन करने के लिए मैं ही नहीं एग्री, फंड्स हंड्रेड रहेगा. परसेंट एग्री। बट आपको एफर्ट और डालना पड़ेगा, चीजें और खुद से करना पड़ेगा, राइट। और यस, हर चीज एकदम से नहीं आएगी, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चीजें आती है। और ट्रस्ट मी, डिजिटल मार्केटिंग मतलब कैंपेन को या अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना ही पड़ेगा। एट द सर्टेन लेवल आपको जाके इन्वेस्टमेंट डालना ही पड़ेगा मार्केटिंग के ऊपर। इट कैन बी ऑफ 2%, इट कैन बी ऑफ 3%, लेकिन अमाउंट स्पेंड करना ही पड़ेगा। ये आप लोगों ने शायद, आप लोगों को पता भी होगा कि किसी भी बिजनेस को सरवाइव करना है तो सर्टेन परसेंटेज डिफाइंड होता है कि मार्केटिंग में आपको इतना पैसा खर्च करना ही करना है। तो वो करना ही पड़ेगा। मतलब हम ये नहीं कर सकते कि हम उसे स्किप करके अपने बिजनेस में पैसा डाल दें, लेकिन हाँ, करना है तो करना है। ये बिना एडवर्टीजमेंट के वी कांट सर्वाइव। और रही बात की स्किल सेट की, चीजें करिए, जैसे जैसे करते जाएंगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई कि दीज आर द फैक्टर्स जो हम खुद से कर सकते हैं, दीज आर द फैक्टर्स जो हम लोग को आउटसोर्स करना है। लेकिन यस, करना पड़ेगा। ट्रस्ट मी, कोर्स करने से हर चीज नहीं आती। जब तक आप लोग मार्केट में रियल टाइम सिनेरियोस पे नहीं आएंगे, खुद से चीजें नहीं करेंगे, तब तक नहीं आता। तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि कोर्स करने से हर चीज आ जाता है। मेक श्योर कि प्रोजेक्ट्स को पकड़िए, क्लाइंट्स को पकड़िए, अपने खुद के उस पर काम करिए, ताकि एटलीस्ट आपका स्किल सेट डेवलप हो। रियल टाइम एनवायरनमेंट पे काम करिए, वो इम्पोर्टेंट है हमारे। सर एक चीज मैं पूछना चाहूंगा, आई यस एम नॉट So, may I leave now, sir? अगर कुछ एक्स्ट्रा नहीं है इसके बाद. यस यस, वी आर डन। सो इफ यू फील गुड, आप लोग फीडबैक शेयर कर सकते हैं, मैंने आप लोगों के साथ लिंक शेयर कर दिया है। सो दैट विल बी Okay, thank. वेरी हेल्पफुल फॉर मी। गूगल सर्चेस पे भी रैंक होने में हेल्प करेगा प्लीज, ठीक है। Okay, thank ठीक you, है। sir. सो यस, सो एनीवन जो आप लोग जिससे हाँ लीव सर, करना आप कर मुझे सकते एक चीज हैं। यस मुझे एक चीज पूछना था, दैट इज आपने कहा कि ये मार्केटिंग एंड ऑल, इवन though I don't own a business, what I really want to ask is that अगर हम इनिशियली पूरे मार्केटिंग को एक साथ सोचने के बजाय हम अगर चीजों को थोड़ा ब्रेक डाउन कर ले, तो लाइक वी टेक बेबी स्टेप्स एंड डू वन थिंग एट अ टाइम, अगर हम ये अप्रोच लेते हैं, विल दैट बी लुक्रेटिव और शुड वी जस्ट फोकस ऑन दी एंटरटेन कि हाँ मार्केटिंग करना है तो बस जो जो चीजें सीखे हैं उसमें अलग अलग जगह पैसे डाल दो, पैसे डाल के कर दो, नहीं नहीं which नहीं, should be देखिए the देखिए, इनिशियल which should स्टेप्स be a आपको, better. इनिशियल स्टेप यू हैव टू टेक, राइट। इट कैन बी अ स्मॉल स्टेप, राइट। इवन आप लोगों ने, रही बात अगर मेरे को पैसा बचाना है, आपने वेबसाइट खुद बना ली, राइट। आप लोगों को लैंडिंग पेज बनाना है, यू क्रिएट बाय ऑल ओन सेल्फ, राइट।
आप लोगों को फॉर एग्जाम्पल क्रिएटिव्स बनाने, आप लोगों ने वो खुद से बना लिया. सो दीज आर द स्मॉल स्टेप्स, राइट? आप ये चीजें खुद करोगे तो डेफिनेटली यू कैन सेव योर मनी एंड यू कैन सेव दोज मनी इनटू योर बिजनेस, राइट? बट यस, चीजें खुद से करेंगे तभी हमें पता लग पाएगा कि ये चीज बेटर है, ये चीज नहीं है. if we are not able अच्छा. if we are not able to if we are not able to create a single banner, then how we can identify the loophole with the designers, what they are doing good or what they are not. Only then we will be able to justify कि that particular guy is doing good. अगर हम नहीं कर पाते तो वो गलत है फिर हमारे साथ. तो अच्छा. यस, स्टेप्स हमें लेना पड़ेगा, बट यस, इट शुड बी कि प्रोएक्टिवली लेना पड़ेगा. वी शुड नॉट बी वेट, राइट? कि चीजें हो जाएंगी, ऐसा नहीं होता. टाइम देना पड़ता है, बिना उसके नहीं होता. हम लोगों को भी Okay. ट्रस्ट में, मैं ये नहीं बोलूंगा कि ईच एंड एवरी कैंपेन इज सक्सेसफुल, राइट? कुछ में स्पॉयलर्स भी जाते हैं, कुछ में इश्यूज भी होते हैं, लेकिन ये ठीक है, चीजें आती आती है तो होता रहता है. अब ऐसा तो है नहीं कि हम लोगों को कुछ शुरू से ही आता होगा, राइट? ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम लोगों ने गूगल की स्टडीज पढ़ी, हम लोगों ने जो जो डॉक्स आए वो हमने स्टडी करा, फिर हम लोगों ने चीजें लर्न करी है. ठीक है सर. ठीक है. सर ये जो पीडीएफ आप जिससे पढ़ा रहे हो आप प्लीज इसको ग्रुप में शेयर श्योर कर श्योर दीजिए. श्योर, मैं डेफिनेटली मैं सेंटर से शेयर कर दूंगा. एंड प्लीज, आई होप सबको सेशन समझ में आया होगा. एंड Yes, sir. मेक श्योर प्लीज शेयर Sir, योर I have फीडबैक. one question. Yes, yes, please, Monica. How can we contact you? So yes, you If can at all we have some queries. So no even problem. I wanted to ask this: where are you working right now, and what has been your experience? So it is being more than 10 years. So that is my LinkedIn profile. मैंने अभी chat पे भी share कर दिया है. So वहाँ पे मेरा contact detail वगैरह सब डला हुआ है. आपको आप लोग वहाँ पे easily contact कर सकते हैं. But on LinkedIn, I think only नहीं, premium users. मोबाइल नंबर एंड email ID is there. Okay. Both are there. Okay. Even Sure. on Google, I have my mobile number is there, right? So don't forget. I think सब लोगों को समझ में आया. Session was good. Yes. Yes, sir. Please acknowledge. Yes, sir. Yes, sir. Right. Yes, sir. Right. Please request कि it is good. It is a time. It is high time. Sir, Yes. even to see your contact information, one has to be need to like subscribe to LinkedIn, not for the free users. नो, वो इनिशियल पे दिख रहा होगा, अदरवाइज गूगल पे आएगा. वो गूगल पे मोबाइल नंबर डला होगा वहाँ पे, गूगल प्रोफाइल पे. Can you ओके, send me मैं that यहीं link? शेयर करता हूँ, नो वरीज, मैं यहाँ शेयर करता हूँ. Just a second. ठीक है. मी अभिषेक अरोरा, दैट इज गूगल प्रोफाइल, दैट इज मोबाइल. एंड प्लीज, इफ यू फील गुड, यू कैन शेयर द फीडबैक. ठीक है. Okay, sir. So yes, it's been more than 10 year experience, right, in the same industry. अगर आप लोग प्रोफाइल चेक करना चाहें, you can easily see. Okay, ठीक है. So we are done. So that is a wonderful audience, and I feel सबको सेशन समझ में आया होगा. And looking forward for the another session, right? ठीक है. Sir, Thank you, sir. sir, Yes, yes, yes. ये लिंक ओपन नहीं हो रहा है सर आपका. नहीं हो रहा होगा. डायनामिक लिंक नॉट फाउंड दिखा रहा है. That is a LinkedIn, No, Second this link. one, Google. second link, yeah. Dynamic link not found. Okay, let me. So you can easily search me on Google. That is with the digital marketing content creator and marketing consultant. So that is a Google. Sure. So okay, so you don't have a website, just you have mentioned a physical location. Yes, physical location. Sir. Okay. Okay, so please don't forget to share your Okay, sir. feedback. Sure. Okay, I And will. we can, if there is any confusion or any reason we can contact you Yes, via yes, you can. your mobile number or LinkedIn. Yes, Okay. you can, please. So please don't forget to share your feedback. Josna, Khushi, Mona, Priyanka, Rahul. Yes, anyone. So please, yeah, thank you Yes, so sir. much, and have a great time and all the best for your future. And please study करिए, इतना कर सकते हैं आप लोग. ठीक है. Thank you, Sure, sir. sir. ठीक है. Thank you Okay, so sir. much. Thank you Good day. so much. Thank you so much for your participation. Please, thank you so much. Yeah. Thank you, Thank you. Indraji. Sorry, Good day. Indra Ali Roy. Thank you so much. Yeah. Indranil. Okay. Indranil Joshi. Good day, sir. Thank you so much. Thank you so much. And great participation. Yeah. Okay. Thank you, Thank you. sir. Yeah. Bye. Bye. Yeah. Bye. Thank you. Thank you, Tanvi. Thank you, Shruti. Thank you, Vivek. Thank you, Rahul. Priyanka. Thank you so much. Thank you. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Yeah.